much is 1 by 7 into 100? How much is this? So I suggest to type it in the chat box, or you can unmute yourself to just quickly answer. 1 by 7 into 100. What is this percent? Yes, quickly. 1 by 7 into 100 is what percent? Okay. So, hello, Samit. How can I calculate this? Can you elaborate your answer? Sir, actually, I've learned these fractions. Okay. So he is saying 1 by 7 is how much? 14.28%. Right. Okay. Can you tell me how much is 1 by 64 into 100? Yes. 1 by 64 into 100. Okay, Arvind. Okay. So only one person is giving this answer, 1 by 64 into 100. Okay, Anadi. Okay. Mhm. Yeah. Okay, Krishna. Okay. So, Krishna, how is this your answer? Hello, Krishna. Can you unmute yourself? Okay. So, Krishna is saying 25 by 16 and then simplify. Okay. Sanya is saying 1.56. So, Sanya, how is this 1.56? So same thing. I simplified both of the 100 upon 64, and then I got the answer. Okay, done. So when we are calculating these percentages and we are calculating all these calculations, right? So the intensity of correctness, right? Just understand these words. Intensity of correctness of my calculation depend on the importance of the calculation, or maybe what I am calculating, right? Suppose I'm calculating, I need to arrange a party, and what is the say portion of chocolates, what is the portion of pastries, right? Cold drink, etc. I need for the party. So if there is some plus and minus, doesn't matter, right? I can arrange them, and if there is something finished, then nobody will take care of this, right? But if you are calculating the projection of missile, right? And if you are calculating, say, some calculation in the universe like Earth movement, stars, and all those things, right? And nowadays we must be having a say good discussion and very wide information about the
ISS, International Space Station, where there are some astronauts. They are stuck there, and different calculations, if and buts are good, right? So for this purpose, we need a very precise calculation, right? And for this part, there are some questions which are having option like none of the above, right? In the examination. So you need a precise calculation. There are some questions which are having type in answer, right? You need to type the number, right? So again, you need a precise figure, right? So we should try not to approximate as much as possible. We should try to have a exact answer, right? And at least two places of decimal, at least two places, right? Okay. So you're solving this 25 by 16, dividing and all those things. But tell me, I suppose everyone must be aware of what? 1 by 2 into 100. How much is this? Very easy, very comfortable. Yes, how much is this? Everyone is doing, yeah, this is 50%. There is a no calculation, nothing, no pen, paper, calculator, nothing is required for this, right? Tell me how much is 1 by 4 into 100. Yeah, this is again very easy, 25%. Right. Tell me how much is 1 by 8 into 100. This is again simple, 12.5%. Yeah. Tell me how much is 1 by 16 into 100. 6.25%. Right? Now tell me how much is 1 by 32 in, yes, how much? This is this is 5% and this is 3.125. So quickly, tell me how much is 1 by 64? That is a half, right? And if I calculate this is 1.5625. So we are calculating this calculation up to the 4 places of decimal and that too precise, right? And there is a no calculator, nothing is required because we have already studied, we have already memorized how much is 1 by 2 into 100. And we are just going half and dividing by 2, right? So just try to relate the things, right? Examiners are checking for your presence of mind, right? For your attentivity, right? Because in these examinations, aptitude-based examination, after pursuing you will be working as a manager and etc. Right? So you should be a very attentive and very reactive for the situations which you are facing, right? And if you just like looking the situations and then watching them and then things will be gone, right? So just be very attentive and very reactive, fast, quick. Right? So this way I can just utilize and I can just memorize this, right? So I suggested try to memorize these reciprocal percentage from 1 to 20, at least this much. Right? Out of these, if I say 1 by 7, right? 1 by 11, 1 by 13, and 1 by 17. These are little typical prime numbers, so just memorize them directly. 1 by 7, as we have just studied, 14.28%. How much is 1 by 11? 9.09, right? 9.09. How much is 1 by 13?
Yeah, 7.69%. And how much is 1 by 17? 5.88. Right. So try to memorize all these percentage at least from 1 to 20. Right. And if you are working this much, then you will be having a good breathe inside the examination. Right. Inside the examination. Okay. So moving further. One 37.5% of 266.67% of 240. Just tell me how much is this? How much is this? Okay, Preeti. Okay. So, Preeti, how is your answer this? Can you explain? So firstly, I will do percentage convert into fraction, Mm-hmm. like 131.5% will convert Mm-hmm. distribute in two parts, 100% and Okay. 37.5%, and Okay. 100% equal to 1 Mm-hmm. and 37.5% equal to 3 upon Okay. 8, and we added both the fraction, Okay. 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 and so on. Okay. So, see, as I have suggested that you just try to memorize, right, by heart all these reciprocal percentage at least till 20, right? So if I look for the first one, 137.5%, this one, right? So we have just discussed these all three, right? So how much is 1 by 8? 12.5%. This one, right? Easy. We have already memorized this, right? Now, if I come here and this is asking for 137.5%, right? So just have a look, 12.5% times of 3, right? How much? This is how much? 47.5, right? Yes. And this is 137.5%, right? So I can say there is something which is complete, and after the complete thing, there is a some more 37.5%, right? And this is nothing but what? Fraction of 1 by 8, right? So if there is a something complete, I can say this is what? 8 by 8, 100%, right? 8 by 8 is 1, which is nothing but 100%. Then I can say this is what? 3 by 37.5%, which is nothing but what? 11 by, right? So we have quickly converted the tough, like tricky percentage into a very simple fraction. Yeah, got it? Okay, come to this. 266.67%. I know 1 by 3 into 100, right? How much? This is 33.33. Yeah. And if I do the what? 2 times of this. So how much? 66.67. Yeah. So again, I can say there is something complete, and then there is some part fraction, right? And now I can have the information that the denominator is 3. So this is 200%, right? So 3 by 3, 100%, plus
again 3 by 3, 200%. And then what? This is 2 by 3, right? So this is complete how much? 8 by, yes, very simple, I suppose. Now I can simplify 11 by 8, multiply 8 by 3, multiply with 200. Cancel this. From 3, cancel this, how much? 80 times, and your final answer is 800. Okay, and you're doing all these calculation in some fractions of seconds, precise, accurate, and getting your answer absolutely correct. Right? So my suggestion to everyone, just start practicing your calculation part, because in most of the examination we will not have the calculator, right? And if you are assuming that you will have the calculator in the examination, so calculator will decrease your speed drastically, right? This will not support you. This will like will be a difficult time for you to match up to cope up the speed of the exam if you're using that, right? Got it? Yes. Okay. So suppose if there is a some person, right? There is a some shopkeeper, okay, and the shopkeeper is selling something, right? Some product, and suppose the initial price is A rupees, okay, and then he is increasing something, okay, and making a price some B, okay. And from B, if he was coming back on the same base price from which the shopkeeper has increased, right? So he should decrease, right? He should decrease. So tell me, if the base price is A and he is increasing 25%, done. So how much percentage decrease he should do to come back again on A? Okay, okay, Manan, okay, Samya, okay, okay, Aryan. Okay, hello, Aryan, can you unmute yourself? Hello. Yeah, Aryan, can you unmute yourself to discuss? Okay, okay, Aryan, no worries. Hello, Rahul. Rahul Sharma, can you unmute yourself? Hello? No? Uh, Gaurav Syal. Yes, sir. So, what is the answer? How much percentage I should come back to reach A? So 20%. How is this? So because let us assume that A is 100, and when we increase 25% to 100, it becomes 125. And Mhm. to come back to 100, we need to decrease the 20% of the B Mhm. to get the same value. Okay, okay. So, Gaurav, tell me, if I say this is not 25%, right? This is not 25%. If this is 37.5, then how much percentage I should come back?
Yes. So this can is I not tell? only So can I for- yeah. tell it in fraction? So the No percentage. See, we are talking about percentage, right? okay. So So answer should be in percentage. no problem. Mm-hmm. It's 27.27%. 27.27. Okay. Okay. So Gaurav is saying 27.27, and this is not only for Gaurav, others should also answer in the chat box. If we are increasing from A to B with a 37.5%, how much I should reduce to come back to A? Okay. Okay, Arvind. Okay. Yes, waiting for others to answer. Okay, Priya. So, Priya, how is your answer? So basically, I took in the fraction way. It's like if 8 takes 37.5, that is 3 by 8. So Mm-hmm. basically, it's like B is equals to A plus 3 by 8 of A, that is 11 by 8 A. Mm-hmm. And if we go for the other side, then it would be like 1 minus, say like B minus 3 upon 11 B. Then we can calculate 3 upon 11 part. So that's actually Okay. 27.2%. Yeah. Okay. Okay. So I suppose that you must have encountered with some questions of like this, that if the price of petrol increased by X%, right? How much consumption should be reduced to make the expenditure same? Hana? If I take some numbers, so yeah, I can say if the price of petrol increased by 25%, how much consumption I should reduce to keep the expenditure same, right? So these are the some kind of questions which are normally there in the speed-based competitive examination, right? And I am just suggesting you that to memorize percentage reciprocal, right? So just see here. So if I say there is a something A, right? And there is a something B, done. And if I ask you, this is increasing, okay, and this is decreasing, right? Same thing as we have just discussed, if the price of petrol increase. So what is the consumption I should reduce? Done. So if I say this is increased by 50%, okay, can you tell me how much B should be reduced to come back the same? If A increased by 50%, how much B should be reduced to keep the expenditure same? Okay, Gaurav. Okay. Mm-hmm. Yes. Others? Quickly. Okay, Priya. Okay. Mm-hmm. Okay, Priya. Okay. Okay, Priya. Okay, so only just 2% Gaurav and Priya are giving the answer. I'm waiting for others. Okay, Anadi. Okay. Okay. So, Anadi, how is this your answer? Sir, as someone had stated earlier, because we are increasing A by 50%, so basically B is equal to 150% of A. And then if I take 150 like to the other side, it becomes 100 by 150. So A is now 100 by 150, which can be written as 2 by 3. And then I just subtracted that from 1, like 1 minus 2 by 3. Okay. So Okay. from that I got it. Okay. So basically, what is my suggestion to increase the speed and to increase the accuracy, right? This homework should be done now, right? This should not be taken to the examination hall, right? You should do all these calculations now
inside the examination, you should be ready directly with the answer, right? So if I look for this part, okay, so if 50%, this is 33.33%, okay. And if I ask you now quickly, right, 33.33%. So what is the percentage decrease for B? Quick, quick, fast. You can unmute and speak out. I can write quickly. Yes, yes. Yes, Bali, 25%, right? And if this is 25%, how much? 20. 20, right? If this is 20, how much? 16.67. 16.67, very good. And if this is 16.67, how much? 14.28. Very good, 14.28. And if this is 14.28, then how much? 12.5. Yeah, this is 12.5 and so on, right? And if suppose this is 100%, this is how much? 50, right? See how, what is there? I am insisting you to memorize the reciprocal percentage, right? So if this is 1 by 1, this is 1 by 2. If this is 1 by 2, this is 1 by 2, right? If this is 1 by 3, this is 1 by 4, this is 1 by 4, this is 1 by 5, this is 1 by 5, this is 1 by 6, right? This is 1 by 6, this is 1 by 6, this is 1 by 7, this is 1 by 8, and so on. You can quickly move and you can quickly get the answer, right? There is nothing require 100 plus 50, then subtracting, getting all those figures, right? Nothing is required. If fractions are there in the mind, answer is also there in the mind, right? But you can say these are the continuous fraction, right? I can calculate the answer, but what is the 37.5% of some other fraction? What to do? How to get? Okay, so now see. So if you are having a sum these cut type of fraction, right? So say this is A, right? And this is B. We are increasing A and decreasing B. So A is how much? 37.5%. No? We have already done with the fractions, memorized, right? I know this is what? 3 by 8. Okay. So this is there. Yeah? Now you want to decrease B. Then what to do? Write the numerator say 3. Yeah, what to do? 3 by 8 is the present fraction. Okay, 37.5%. So write 3 as it is. Then this is this. What is the denominator? Add these two numbers, 3 and 8, right? And write it here. 3 and 8 is what? 11. We have just discussed what is 1 by 11? 9.09. 3 times 3 times is what? This is 27.27. You have just told me the same number? Yes or no? Right? Getting this? Understood the logic? Yes, sir. Yeah. So this way, if there is some random fraction, right, and if I'm prepared with the fractions maybe up to 1 to 20 or maybe 25, then I can very easily calculate what is there and what is my answer. Right? So tell me, if this is increased to 60%, I'm giving you first easy number, right? If this is increased by 60%, so tell me how much B should be reduced. Quick, fast.
This much of time required for this? Yes, Bharat. Yes. Yashwant, correct. Soumya, percentage, not fraction, right? We are talking about fraction. Yes, yes. So, 60%, 3 by 5. What to do? Keep the numerator same, 3. Add these two numbers, 3 plus 5, 8. Write it where? In the denominator, I know 1 by 8 is 12.5 and 3 times 6 is 37.5%. So if A is increased by 60%, B should be reduced by 37.5%. Right? Profit and loss. So there are three types of prices in profit and loss. The first one is cost price, then the selling price, and then the marked price. These are the three types of prices. Marked price has several names. It is sometimes called as listed price or fixed price or MRP or market price, okay, and so on. There are some more. Cost prices, cost price has only one name, cost price. Selling price is only one name, but marked price has several names. Marked, listed price, fixed price, MRP, market price, okay, and so on. Okay, so three types of prices are there: cost price, selling price, and market price. Okay. Now imagine a scenario in which I am a shopkeeper. I am suppose having a showroom of electronic items. So I bought a fridge on my showroom. I bought a fridge on my showroom and I bought it for rupees 10,000. Okay. And then as soon as I bought that fridge in my showroom, I put a price tag on that fridge of 15,000, right? Imagine this very, very practically. I bought the fridge at 10,000. I put the price tag of 15,000. And then suppose you came to buy that fridge. So I gave you a discount of suppose 3,000 and sold it at 12,000. Okay. 10,000 की फ्रिज में लेके आया, 15,000 उस पे 15,000 का स्टिकर लगा दिया और फाइनली मैंने उसको 12,000 में तुम्हें बेच दिया, मान लो, ठीक है? तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन दिस, मार्क प्राइस इन दिस एंड सेलिंग प्राइस इन दिस? इन तीन में से कौन सी कॉस्ट प्राइस है, कौन सी मार्क प्राइस है और कौन सी सेलिंग प्राइस है? प्रतीक करेक्ट? एक ही मैसेज में सारे लोग टाइप करके भेजो, अलग अलग मैसेज मत करो. Everyone's looking correct till this point. Himanshu is the first person to be wrong. Himanshu, एक बार और सोचो, गलत हो तुम. Everyone else is correct. Himanshu, this is the cost price. This is the marked price, जो marked है. Marked मतलब जो display की जा रही है ना? No, Matangi, you are also wrong. 15,000 is not the selling price, it's the mark price. Selling price is the price in which the product is actually sold.
Okay. So that's 12,000 in this case. Okay. It's okay. Atangi, I hope this is clear. Okay. Now tell me, what is the overall profit in this transaction? What is my overall profit in this transaction? And how has that been calculated? Which price minus which price? No, Krishnan, I have not, Krishnan and Suradeep, I have not asked you for percentage profit. I'm just asking you the simple profit, the absolute value of the profit. Okay. Right. So when we, so this would be 2000, and that has been calculated by subtracting CP from SP. So SP minus CP is 2000, SP minus CP. So whenever you subtract CP from the SP, the quantity that we get is profit. Whenever SP is high, CP is low, the quantity that we'll get is profit. ठीक है? जब भी selling price ज़्यादा होगी, cost price कम होगी, तो profit मिलेगा. ठीक है? Now in the same case, how much absolute value of discount you're getting? Discount कितना मिल रहा है तुम्हें? और कैसे calculate होके आया? किस प्राइस में से क्या प्राइस माइनस करके? Yeah, everyone's correct. So when we subtract selling price from the mark price, so we'll get the discount, which is 3000 in this case. This is calculated by MP minus SP. Okay, so whenever marked price is higher and selling price is lower, the quantity that we get is discount. Okay, so whenever we subtract selling price from the mark price, we get discount. Okay, so I hope this is clear. Scenario number two is I bought a fridge at 10,000. I put a sticker on the fridge, MRP rupees 15,000, but it was not getting sold. Okay. In 1 year, in 2 years, in 3 years, it was not getting sold. So I decided to give up that fridge on the loss also. So suppose you came to the showroom and asked for the fridge, and you said, I'll be able to pay only 7,000 for this. Okay, so I agreed. I said, it's okay, you pay 7,000 and take this fridge. So in this overall transaction, do I have the profit or loss? I have a loss. How would that loss be calculated? Which price minus which price? Everyone, which price minus which price? Princey wrong. Kushal wrong. Okay. Princey and Kushal, update your answers. Okay. So whenever we subtract SP from CP, so we get the quantity called discount, loss. Okay. So whenever the CP is high and the SP is low, so the quantity that we get subtracting SP from CP is the loss. Okay, I hope this is clear. Okay, scenario number 3, I bought a fridge at 10,000, marked at 15,000, and I
applied GST on it, and the selling price of fridge, I sold that fridge at 16,000. So the quantity that I have taken into the consideration in this case is the tax. Okay. So tell me, what is the tax on this and how that tax has been calculated? CP is 10,000, mark price is 15,000, selling price is 16,000. So I have put a tax on that fridge. And how is that fridge, how is that tax calculated? Which price minus which price? How much is the tax and how is that calculated? Students? Yeah. Suradeep, wrong. So when we subtract mark price from the selling price, the quantity that we get is tax. Okay. So selling price minus mark price will give you tax. Whenever selling price is high, mark price is low, so there must be some tax involved. Is it clear, students? So profit and loss between cost price and selling price, discount and tax between selling price and mark price. Does SP includes tax? Yes, obviously. अगर 500 रुपए की टी शर्ट, अगर 500 रुपए की टी शर्ट जीएसटी लगा के मान लो 18% जीएसटी लगा के लाए हो तो 590 की मिलेगी. तो 590 है ना selling price. Is this and not MP? Is this a convention? सेलिंग प्राइस में टैक्स होता है, मार्क प्राइस पे टैक्स लगता है. मनीष, अगर कुछ और पूछ रहे हो तो अनम्यूट कर सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारा क्वेश्चन क्लियरली समझ नहीं आ रहा. I hope it is clear. Unmute feature is disabled. नहीं मैंने enable किया हुआ है. अच्छा wait, शायद मैंने now you can unmute. Yeah, the question is, the tax, is it not included in the mark price for our problems? No, it's not included. So whenever we have a selling price, we can assume that the tax is included and not on the mark price. Yeah, in the mark price, the tax is not included. Okay. You see, whenever you go to the McDonald's, you see the burger of around 50 rupees. मुझे exactly rate नहीं पता, latest, but suppose it is 50 rupees. So in the bill, you get the tax also, and this burger cost you around 60 rupees. No? You try to imagine this practically. Restaurant में menu में जो price लिखा होता है, so we have suppose a platter at 500 rupees. So after this, the tax is applied. Yeah, got it. Got it. Okay, so this is the case. Now this diagram, this little diagram tells you a lot of things. The few things that this diagram tells you is that profit and loss does not have any dependency on mark price. Mark price से profit और loss का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है? अगर मैं 10,000 रुपए की फ्रिज लाता हूं और उस पे 15,000 मार्क करता हूं एंड 16,000 में बेचता हूं, तो मेरा प्रॉफिट 6,000 है.
मेरा प्रॉफिट 6000 है. Now, even if I change this mark price from 15,000 to 20,000, still, if I sell it at 16,000, my profit doesn't change. Is this clear? If the cost price is 10,000 and mark price is, sorry, selling price is 16,000. So whatever mark price is, that doesn't affect the profit or the loss. Okay, this is a very important thing. Profit and loss are not calculated, are not related with mark price. Okay, first thing. And similarly, discount and tax doesn't has anything to do with the cost price. Discount and tax are the two things which are at the customer's end, right? And this is the shopkeeper end. Okay, shopkeeper has to just deal with the cost price and selling price. उसे अपने cost price और selling price से मतलब है. लेकिन you as a customer, सोचो, इसको बिल्कुल practically imagine करो. You as a customer have to just look at the mark price and the selling price. You don't even know what the cost price of the product is. है ना? ये तो तुम्हें पता ही नहीं होता ना. मैकडी का बर्गर अगर 50 रुपीस का है, right, and you're paying 60 rupees for it after tax. So do you know how much the burger is costing? The burger is costing for the McDonald's. I mean, obviously McDonald's is not spending 50 rupees on the burger. No? McDonald's should be spending less than 50 rupees. Suppose McDonald's is spending 45 rupees or 25 rupees or even 35 rupees, something like this. Okay, so I hope this is getting clear. ठीक है, जितना practically imagine करोगे उतना better समझ पाओगे. So discount और tax जो है वो customer end पे हैं. These two terms don't have anything to do with the cost price, and profit and loss don't have anything to do with the mark price. I hope this is completely clear. Okay. The next thing that this diagram tells you is you cannot go from cost price to mark price directly by using any of these data: profit, loss, discount, or tax. Okay, you have to go through the selling price. There is no direct way available to go from cost price to mark price. Okay, there's no direct way available to calculate the mark price from cost price by using profit, loss, discount, or tax. You have to use two variables: either first profit and then discount, first loss, then discount, or then tax, and so on. Okay, so you anyway have to go through the mark price while moving from cost price to mark price. Sorry, you have to go through the selling price if you want to go from cost price to mark price. Okay, so these are the 2-3 things that this diagram tells you, important things. Now the next thing is the percentage profit and loss. If I talk about the profit or loss percentage, profit or loss percentage, what is that? It is equal to profit or loss divided by which price into 100. Profit and loss किसकी percentage कैसे calculate की जाती है? Everyone, if you want to calculate the profit or loss percentage, you have to divide profit and loss with some price into 100.
So what this price would be? Yeah, everyone's correct. Yeah, good. So that is cost price. Profit and loss को as a percentage of cost price calculate किया जाता है. ठीक है? And for the obvious reasons, ये तो बहुत ही जनरल चीज है ना? I hope ये बताने की जरूरत नहीं है. अगर मैं 10,000 रुपए की चीज लेके आ रहा हूँ and I'm selling it at 16,000, so I have 60% profit. Right? I have 60% profit. And that 60% is the 60% of this quantity, cost price, not of 16,000 or not of 15,000. Okay, I hope this is clear. Profit and loss is always calculated on the as the percentage of cost price. And what about discount or tax? Discount or tax percentage is always calculated on students, discount or tax is always calculated on Amulya, wrong. थोड़ा practically imagine करके बताओ. If you imagine this practically, there's no rocket science in this. This is very simple things. 100 रुपए की टी शर्ट है, 100 रुपए की टी शर्ट है, उस पे अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 90 रुपीस की पड़ती है. तो जो 10% है, सॉरी 90 रुपीस नहीं, विकास रॉन्ग. तो जो 90 रुपीस है वो तुम्हारी सेलिंग प्राइस है, 100 रुपए मार्क प्राइस है. तो 10% डिस्काउंट जो मिला है वो किस पे मिला है? 100 पे ना. क्या इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है? राइट, कॉस्ट प्राइस तो सपोज 70 रही होगी, 80 रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा. तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं है ना. तो जो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया है 10%, वो किस पे किया है? 100 पे. दैट इज द मार्क प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट. आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर. ठीक है. एंड सिमिलर इज द केस विद टैक्स. जो अगर इस पे जीएसटी भी लग रहा है टी शर्ट पे, मान लो 18% जीएसटी लग रहा है, सो दिस टी शर्ट वुड कॉस्ट अस 118 रुपीज. So that 18% is applied on this cost. This sorry, not cost. This price, that is marked price. Okay, so every calculation related to discount or tax, whichever calculation is there on the customer's end, is always done on the marked price. Okay, you can imagine this practically. Okay, so the thing is that profit and loss question will get you wrong. You will get the wrong the profit and loss question wrong only when you do any of the cross connection. I mean, you calculate profit on, suppose you calculate profit as a percentage of mark price, or loss as the percentage of selling price, or discount as the percentage of cost price, or anything. Right? तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन तभी गलत होगा जब तुम क्रॉस कनेक्ट कर दोगे. प्रॉफिट को मार्क प्राइस पे कैलकुलेट कर दोगे, लॉस को सेलिंग प्राइस पे कर दोगे, एंड सो. ठीक है. इफ यू परफेक्टली एंश्योर that profit and loss would be calculated on cost price, discount and tax would be calculated on mark price, so none of your profit and loss question can be wrong. ठीक है. बेस हमें सही रखने होते हैं, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना होता है. बेस हमारे सही रहें तो यू विल गेट दिस करेक्ट आंसर. ठीक है, डन. अच्छा, this complete concept also tells you that there is no calculation on selling price. There is no calculation done on the selling price. And practically भी assume कर सकते हो, imagine कर सकते हो कि selling price is the final price at which the product is being sold.
right? It is being taken out from the showroom. Okay. There is no further calculation on the selling price. If you are, suppose if the shopkeeper has agreed to sell that fridge at 12,000 and you are still bargaining, right? And you finally arrived at 11,000 and you paid 11,000 only to the shopkeeper. Okay. So this is not your selling price. If you're still bargaining, if you're still doing some calculations on this, so this is not your selling price. Selling price is the final price on which the product is actually sold. So there is no further calculation on selling price. ठीक है? Selling price में तो हम कुछ plus minus multiply divide नहीं करते हैं ना. Selling price तो वो final price है, ultimate price है जो सबको लगाने के बाद आई है. ठीक है? Done. I hope you have understood this concept. And I hope you have drawn this. ये जो left hand side वाला है, this picture will clear you all the concepts of profit and loss. बस इतना ही चाहिए. ठीक है? If you have not written it down, just take the screenshot. Then we'll move to the questions. Okay, so I hope everything's done. First question. First, we'll do some extra questions. Then we'll move to the sheet. First question is, a product was marked 40% above the cost price and then a discount of 25% was offered. Find the net profit or loss percentage. Okay, please do this. A product was marked 40% above the cost price and then a discount of 25% was offered. Find the net profit or loss percentage. Do it. Suryadeep, correct. Krishnan, correct. If you are pro with all the percentage calculations that we had done in last time, you will be able to, you can, I mean, I'm not saying surely, but you can do it within 3 seconds. Right? For an expert, this question is not more than 3 seconds. Okay. Yeah. Amulya, wrong. Amulya, you have got something correct, but that's not the final answer. Half of the things you have got correct. Okay. Shiva, correct. Everyone else is correct. Himanshu, wrong.
So starting with this, let the cost price be 100. Okay. We have to start the question like this. Let the cost price be 100. And if there is 40%, if the product is marked 40% above the cost price, so the Amule correct. So the mark price is 40% above the cost price. So mark price would be 140. Is this clear? Okay. And then a discount of 25% was offered. So discount is 25%. And this 25% is of marked price of this price. Okay. So 140 ka 25%. You will get 35. 25% is 1/4. So 1/4 of 140, you will get 35. Okay. So the selling price will be 140 minus discount 35. So that's 105. I hope everything is correct till this point. So if a product is bought at 100, sold at 105, the profit is 5%. Okay. So 5% is your final answer. I hope this is completely clear. And this is how you do this question simply. Okay, then we have I'll just change this value and do the same question again. If I write a product was marked 60% above the cost price, right? And then a discount of 40% was offered. So what is the net profit or loss percent? Tell me the profit or loss percent with the term that whether it is a loss or profit. Everyone's correct till now. Everyone's correct till now. So answer is loss of 4%. Loss of 4%. Okay. Anyone not able to do this? Do I need to tell? Mark price would be 160 in this case. Discount is 40%. So 40% of 160 will give you 64. So the selling price would be 96. And there would be a loss of 4%. Okay. All right, moving ahead. Next question. If we have something like cost price of 4 apples is equal to selling price of 6 apples. So find the profit or loss percentage. Net profit or loss percentage. Please do.
cost price of 4 apples is equal to selling price of 6 apples. So we have to find the net profit or loss percentage. Yes, Krishnan correct, Suradeep wrong, Manish correct. First of all, would it be a loss or profit? Tell me. Shiva wrong. पहली चीज ये बताओ कि प्रॉफिट है कि लॉस है? Right. Yes, Prateek correct. Princy correct. Yes, Krishnan correct. Kushal correct. Amulya correct. Good. So, how to do this? Cost price of 4 apples is equal to selling price of 6 apples. Let both these numbers be x. Matlab, if I assume that for x rupees I bought 4 apples and for the same x rupees I sold 6 apples. So जितने रुपए में अगर मैं 4 एप्पल लेके आ रहा हूं उतने ही रुपए में 6 एप्पल्स बेच रहा हूं, तो मतलब 2 एप्पल ज्यादा बेच रहा हूं तो मुझे लॉस है. उतने ही रुपए में प्रॉफिट तो है ही नहीं ना हिमांशु, लॉस है. जितने रुपए में 4 एप्पल्स लेके आ रहा हूं उतने रुपए में 6 एप्पल्स बेच रहा हूं. ठीक है, तो लॉस है ना, ये तो सिंपल. दो एप्पल एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं सेम प्राइस पे. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच लॉस इज देयर. सो टू कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज वी नीड टू सी 1 एप्पल. तो एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी x/4, है ना. 4 एप्पल्स x रुपीस के आते हैं, so the cost price of 1 apple would be x/4. And 6 apples, 6 apples are sold for x, so selling price of 1 apple would be x/6. Got it? So the profit can be calculated, sorry, loss can be calculated by doing CP minus SP divided by SP into 100. So that's CP minus SP divide by CP into 100. So x/4 minus x/6 divided by x/6 x/4 into 100. Okay, you can do this yourself. But the thing is, how to make this calculation easier? Can anyone tell me how to make this calculation easier? The calculation that we have to do is x/4. नहीं, ऐसे अप्रोच मत करो मनीष, कंफ्यूज हो जाओगे. प्रॉफिट जब होगा तो जब ये क्वेश्चन रिवर्स होके आ जाएगा प्रॉफिट में, तो फिर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना. यस, कृष्णन करेक्ट. x/4 minus x/6 divided by x/4 into 100. How can we reduce this calculation? To reduce this calculation, instead of x, use the, yes, Prateek, correct. Use the best value, which makes your calculation simpler. And how can we do that? By taking the LCM of 4 and 6 as the price. So LCM of 4 and 6 is 12. Okay, so we can imagine that in 12 rupees, now you see how this question becomes easier. Can I just imagine that in 12 rupees, I have bought 4 apples and sold 6 apples. In 12 rupees, bought 4 apples and sold 6 apples. Okay. So if we talk about 1 apple, so the cost price of 1 apple would be 12/4.
I hope this is clear, which is 3. Okay. And the selling price of one apple would be 12 by 6, which is 2. There's a loss of 1 rupee, and that one loss, if I calculate the percentage, that one is out of 3, right? Cost price is 3, so 1 is out of 3 into 100, so that will give you 33.33%. So as you can see, the calculations will become very easy now. So you should use the LCM method. Clear, students? I hope everything is clear in this. Okay. Okay, what if I just change this question to cost price of 24 apples is equal to selling price of 20 apples. So find the net profit or loss percentage. Do this. Quickly. Now this can be easily done. Yes, Suradeep correct, Krishnan correct, Kushal correct, Prateek correct, Shiva correct. Manish correct. All right, so the answer is 20% profit. The LCM of 28, 24 will give you will be 120. Okay, so if we talk about one apple, so cost price of one apple would be 120 by 24. That's 5. Selling price is 6. So there's a profit of 1 rupees. Profit is 1 out of 5 into 100. So that's 20% profit, right? So this was exact question repeated. Okay, now we move to the questions from the sheet. Let's do at least 2-3 questions before we end. Skip question number 1. Try question number 2. Then you can try question number 4, 5, Yeah, this you can do.
Pratik wrong. Kushal correct. Shiva wrong. प्रतीक एंड शिवा अगर जितने रुपए में 20 आर्टिकल ला रहा है उतने रुपए में 25 आर्टिकल बेच देगा, है ना, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता ना। तो 25 इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू शुड डिस्कार्ड इन दिस, है ना। कम आर्टिकल्स बेचेगा उतने रुपए में, तभी तो प्रॉफिट होगा। सूरदीप करेक्ट। कृष्णन करेक्ट। Yes, Manish correct. Second is correct. Fourth is wrong. So the cost price of 20 articles is same as the selling price of X article. So cost price of 20 articles is equal to selling price of X articles. Right now, the problem is that we have X here. So we can't take the LCM of 20 and X, right? So just take this as 20. I think that would be better. Okay. If you take this as 20, so we'll have the cost price of one article as 1 rupee. Okay. So then you can solve. So if we talk about one article, so the cost price of one article is 1 rupee, right? And if there's a profit of 25%, okay, if there's a profit of 25%, so the selling price of one article has to be 1.25 rupees. Is it clear? So the selling price of X article is 20 and one article is costing one article is sold at 1.25 rupees, right? So how many articles would be sold at 20? So 20 by 1.25, that has to be your answer. 20 by 1.25. So 20 by 5 by 4, what we can do is 16. 16 is your final answer. Is there anything that you are not able to understand in this, students? Yeah, Himanshu, fourth is correct. Suradeep, fourth is wrong.
Question number 4. In a certain store, profit is 320% of the cost. So if the cost is 100, the profit is 320%. That's 320 of the cost. So the selling price has to be 420 rupees. Okay? Selling price has to be 420. So if the cost is increased by 25%, so the new cost is increased by 25%, so that's 125. 125. Okay, but the selling price remains same. So selling price still remains same at 420. Now the profit would be decreased by 25 rupees. So that's 295. Now the new profit is 295. Okay. So what percentage of selling price is the profit? What percentage of the selling price is the profit? Now this is specifically given. This is not the profit percentage. Profit percentage hota, so we would have calculated on cost price only. But this is a statement asking you for what percentage of the selling price is profit. So what percentage of 420 is 295? 295 by 420 into 100. This is what we have to calculate. Okay, after that you can approximate. 295 is what percentage of 420? Obviously it can't be 250%. Because it is not greater than 420. It can't be 100% because it is not equal to 420, right? So among these two, I think 30% is also discarded because 30% is a very low value, very less value. So you will get an answer from here only. Okay. So simple interest and compound interest. So I suppose that say some of you must be helping your parents, your elder brother, sister, etc. In savings, right? When they are putting up the hard-earned money into the saving, into the different instruments of the saving, right? So I suppose that some of you must be helping them to calculate, to decide how much to save, what to save, right? So there might be some discussion within the family, right, with some of you. So anyone here can tell me, right, unmuting yourself, can tell me what is simple interest and what is compound interest. You can unmute yourself and you can just share your maybe the idea, maybe the definition, the experience regarding this simple interest and compound interest. Yes. Hello, good evening, sir. Hi, Aman. Good evening. Good evening. Yes. Yes, sir. So, that is what I understood about the SIN CI. The simple interest is an interest which is procured on the principal amount. For example, Okay. if we are taking amount of money, like putting amount of money in a bank account, so they will give you the interest rate of, for example, 6 to 8 per annum, which is calculated upon your principal amount. And for the compound interest, in a simple language, it can be said interest on interest along with the principal. So whenever we are investing in some instruments which are giving us the, for example, we are investing in some stock and they are giving us the interest rate. So, or the SIP, the simple example will be the SIP. What they do, if we put SIP for like 500 rupees, they will calculate the first month for on the 500 rupees, and later on, they will put an interest rate on the principal amount as well as the interest we earn from the first amount, and then the total will be the principal amount, which will be we'll getting the interest upon that. So that's right. Yes. Okay. So basically, as Aman was discussing, so he was very correct. He was very right in discussing, right? But
one thing I just want to correct here with the statement of Aman, that if you're investing your money in any official in the sense in any instrument, in any place where the government is involved, the legal bodies are involved, right? You will be always getting the compound interest, whether this is a saving account, whether this is the FD account, right? Whether you're putting your money in a SIP, the systematic investment plan, right? Any instrument, any method where the government or where the law is involved, right? You are earning the compound interest, right? Now, suppose I need to say some money, maybe say some 10,000 rupees for us some time, maybe 15 days, 20 days. So rather than going to a bank and taking a loan for 10,000, 20,000 money, I just asked to my friend, see, I need to say some urgency and I need to say some 10,000 rupees. Can you give me, say, 10,000 rupees for the 15 days? I'll just return after 50 days, right? So this is what, this is a relationship of friendship gesture, right? Because he is my friend, right? So this is a relationship of friendship gesture. So just like because of the friendship or maybe in the relation, right? One relative, one friend is giving us some money to the other, right? And when the job, when the work is done, we are returning the money, right? So they say, okay, now there is no need to pay some extra benefit, right? You can just return the money which you borrowed. जितना आपने लिया था आप उतना ही दे दो, है ना? आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, वी आर द फ्रेंड्स, वी आर द रिलेटिव्स। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो नॉर्मली हम आपस में फ्रेंडशिप रिलेशंस में कई बार जैसे जरूरत हो जाती है तो हम देते हैं, तो वहां पे होते हैं, है ना? बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो जितने भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी बैंक हैं, वो सब वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? So if I talk about for the terminology here first, right? Okay. So for the terminology, first is the principle. What is principle? The original money which you are borrowing or giving to someone, right? Original money. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे को 1,000 रुपीज दे दो, मैं आपको 2 दिन के बाद रिटर्न कर दूंगा, सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल, है ना? नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? आपने बोला ठीक है 1,000 रुपीज ले लो, बट आपको ना मेरे को कुछ बेनिफिट तो देना पड़ेगा बिकॉज मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, है ना? तो जो बेनिफिट आप मेरे से चार्ज कर रहे हो, जितना भी आप बेनिफिट मेरे से डिमांड कर रहे हो, वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम बैंक में, म्यूचुअल फंड्स में, SIP, पोस्ट ऑफिस, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपना मनी सेव करते हैं, है ना? और उसको थोड़ा थोड़ा सा एडअप करते रहते हैं। तो जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस मनी पे हमें इंटरेस्ट, हमें बेनिफिट देता है बिकॉज हमने उनको मनी दिया है अपना, तो वो उस पे मैं हमें इंटरेस्ट, सम बेनिफिट देते हैं। सो दिस इज माय इंटरेस्ट, है ना? इसके बाद टाइम, टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप बोरो कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 मंथ है, 1 ईयर है, 2 इयर्स है ना? तो इसमें ना क्या बोला जाता है कि आई सपोज दैट सम ऑफ यू मस्ट हैव स्टार्टेड वर्किंग, सम ऑफ यू मस्ट हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी एंड यू विल बी इन से इन योर अर्ली लाइफ 20s, 25 years, 26 years or so, right? तो क्या बोला जाता है कि अगर आप इस एज ग्रुप में हैं समवेयर अराउंड 25 इयर्स, तो आप ना छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। जैसे अभी अमन ने बोला कि हम SIP कर सकते हैं, है ना? तो यू कैन स्टार्ट विद मे बी ऐसे 500 रुपीज पर मंथ, यू कैन स्टार्ट विद ऐसे 1,000 रुपीज पर मंथ, है ना? अब इसके लिए क्या होगा कि आपने टाइम डिसाइड करना है, कितने टाइम के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, राइट? बिकॉज यू आर वेरी यंग और आप अभी स्टार्ट करो डिपॉजिट करना, है ना? So you can take up a little long time, maybe 20 years, 25 years, 30 years, right? So by the time you are like to the end of your professional life, right? After 30 years, after 25 years or so,
you will be having some accumulation of money with you, right? For your some requirement, for your some needs, right? तो इसमें क्या होता है कि जितना भी टाइम आपका ज्यादा होगा, है ना, जितना भी टाइम आप ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ही आपका मनी ज्यादा होगा. एंड आई सपोज यू मस्ट हैव heard of one statement, that is a power of compounding. Yes, have you heard this statement, power of compounding, right? And there are, say, various persons in India, right? And in the world also, they are now maybe the richest person, or maybe the, say, millionaire, billionaire, by using the concept of, yes, power of compounding. Yes, yes. So Raghav is very correct. Raghav is saying that we have the 7 wonders in the world, right? And this power of compounding is what? The 8th wonder in the world, right? And yes, Shivam is again very correct. He is naming a one person. I suppose every one of you must have heard. This is Mr. Warren Buffett, right? He is an American citizen and he is a billionaire just by investing the money. And here in India, I suppose you must be knowing the person. Now he is no more with us, right? What's the name? Mr. Yes, Mr. Rakesh Jhunjhunwala, right? He is again, yes, yes, Raghav, yes, Shiva, right? So, yes, Aman, yes. So, these are the some gentlemen, some of them are with us right now, some of them are not with us right now. So, we are very unfortunate to like not having them with us. Because now we cannot like interact with them, we cannot go and attend their speech, attend their lectures, right? So the power of compounding is very, very beneficial for the persons like you who are in a early age of earning, right? So you can start saving the money, your pocket money also, your earned money also, like small deposits, right? And when you will be like after 30 years or 35 years, you will be having a large capital of, right? Okay, so this is time. This is the power of time, the power of compounding, right? Rate of interest, right? So rate of interest अगर हम बात करते हैं तो आपने कभी किसी को भी पैसा दिया, बैंक में डिपॉजिट किया, राइट? तो उससे आप किस रेट पे कितने परसेंट का बेनिफिट लेते हैं, है ना? जैसे सेविंग अकाउंट है तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में हमें 6-7% के आसपास का बेनिफिट होता है. अगर आप एफडी वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, अराउंड 8-9% हो जाता है ना? अगर आपने सपोज लोन लिया है, पर्सनल लोन है, आपने कार लोन, व्हीकल लोन लिया है, आपने हाउसिंग लोन लिया है, तो क्या होता है कि आप उस पे इंटरेस्ट पे करते हो, है ना? तो देयर इज सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जैसे अभी हम देखें कि जो हाउसिंग लोन है ना, तो वो सब अराउंड करीब 9.5% के आसपास है. तो जो भी आप लोन लेते हो, सपोज आपने 100 रुपए का लोन लिया, तो आपको क्या करना है, आपको 9.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, बिकॉज आप एक मनी को उसका बेनिफिट ले रहे हो, है ना? किसी से आपने पैसे लिए और उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहे हो. तो ये जो एंजॉय आप कर रहे हो ना, इसके लिए आपको कुछ तो पे करना ही पड़ेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरेस्ट. और किस परसेंटेज से देना है, किस रेट से देना है, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? Then we are having this term that is we are calling as amount, right? So amount is what? This is nothing but that is principal plus interest, है ना? तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है ध्यान देना होता है जब भी हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं, कि जो प्रिंसिपल है वो बेसिक मनी है जो आपने लोन की तरह से लिया है या आपने बैंक में डिपॉजिट किया है. देयर इज सम इंटरेस्ट, उस पर आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए है वो आपके पास में, राइट? बैंक ने या आपने बोल दिया कि मुझे इतना परसेंट का बेनिफिट चाहिए, तो वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. और जब आपने टोटल पे किया तो जो प्रिंसिपल का जितना इंटरेस्ट पे किया वो आपका टोटल अमाउंट हो गया, है ना? तो ये इसमें कुछ टर्म्स हम टेक्निकली यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? नाउ मूविंग फर्दर, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट. इजी है, बहुत ही इजी है, बट इसमें जैसे मैंने कई बार पहले भी बोला है
कि हमें थोड़ा सा टेबल्स, स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशंस वो करने हैं, मेमोराइज करने हैं। अगर हम वो कर लेते हैं तो कैलकुलेशंस फास्ट हो जाते हैं, अदरवाइज वी आर जस्ट विद calculator, or calculator is a time consuming process, right? So simple interest is what? Simple interest is given by this formula. So I suppose everyone can recall from the old schooling days. P is the principal, R is the rate of interest, T is the time duration, and divided by 100. है ना? Now simple interest जो है वो मेरा arithmetic growth है. Arithmetic growth मतलब कैसे? कि अगर आपने सपोज 100 रुपीज का बेनिफिट लिया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट की जिससे हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरा? दिस इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना. ना अब मैं कहता हूँ कि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो है ₹1000, ठीक है. आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो लगाया सपोज 10% पर एनम, डन. और आप लेते हो टाइम ड्यूरेशन कितना? 1 ईयर, है ना. तो जरा मेरे को आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप 1 साल के बाद जब आप पे करोगे तो कितना इंटरेस्ट पे करोगे? राइट, 100 रुपीज, है ना. कैसे करेंगे? प्रिंसिपल मेरा हो गया 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरा 10, टाइम हो गया 1 ईयर का, और ये हो गया मेरा 100. सिंप्लीफाई किया तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल जाता है यहाँ पे? 100 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है, राइट. ये हो गया. बट अगर मैं कहता हूँ कि ये ना टाइम 2 इयर्स हो जाए, है ना, 1 ईयर की जगह 2 इयर्स हो जाए, तो अब आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 200 रुपीज, है ना. तो यहाँ पे ये सेटल, ये बैंक, राइट, 200 रुपीज. तो अब मैंने ना देखा यहाँ पे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो हमेशा किस वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर दिस वैल्यू विच इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल, है ना. तो जितना भी आपने इनिशियल मनी डिपॉजिट किया है, आपका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, चाहे कितना ही लंबा टाइम ड्यूरेशन है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, वट, कितना ही लंबा टाइम ड्यूरेशन है, अगर आपने स्टार्ट में 1000 रुपये, 1000 रुपीज डिपॉजिट किया है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ 1000 पर ही होगा, है ना. बाकी जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो आपको सपोज ईयरली बेसिस पे 100 मिल रहे हैं, वो आप चाहे बैंक में रखो, है ना, या उसको वहां से विड्रॉ करो, उस पे आपको बैंक कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, राइट. सो दिस इज द वन ड्रॉबैक आई कैन से फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज इसमें ना आपका जो मनी है वो अभी हमने क्या देखा, ये मनी मेरा अरिथमेटिक ग्रोथ में इंक्रीज कर रहा है. फर्स्ट ईयर क्या हुआ? 100 रुपीज, सेकेंड ईयर 200 रुपीज, थर्ड ईयर 300 रुपीज, फोर्थ ईयर 400 रुपीज, है ना. हर साल 100 रुपीज बढ़ रहे हैं. तो क्या हो रहा है? एक ना लीनियर फैशन में एक लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है, फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है ना. सो दिस इज व्हाट? अरिथमेटिक ग्रोथ. एंड यही रीजन है कि नॉर्मली जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे मनी डिपॉजिट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रोथ नहीं होती है ना. वी ऑलवेज ट्राई टू पुट अ मनी इन वो कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट. सो दिस इज व्हाट? अरिथमेटिक ग्रोथ. अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, राइट, फिर वी गो फॉर द से इन डिटेल. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? दिस वन. ना अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? सिंपल इंटरेस्ट, राइट, SI. बट यहाँ पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? A. एंड व्हाट इज A? अमाउंट. एंड अभी हमने चेक किया था कि अमाउंट क्या होता है? विच इज प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट, है ना. तो जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है ये वाला, ये आपको सिर्फ बेनिफिट बताता है, जितना बेनिफिट आपको हो रहा है, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, राइट. और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को एड अप करके आंसर देता है कि आपका टोटल कितना मनी हो रहा है ना. तो अभी जैसे आपने
कुछ सेविंग अकाउंट्स, कुछ जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स या SIPs वगैरह आपने किए होंगे, है ना। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हम अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा टाइम टू टाइम उसको चेक करते हो। चेक क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो मैंने मनी डिपॉजिट किया है वो मनी मेरा कितना ग्रो कर गया, किस रेट से ग्रो कर रहा है, कितना बेनिफिट मेरे को आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉस हो रहा है ना। सो दिस इज व्हाट अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल जो मैंने डिपॉजिट किया था और प्लस उसके साथ इंटरेस्ट, है ना। सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना। दिस इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 plus r divided by 100 raised to power n. A is the amount, P is the principal, R is the rate of interest, N is the time duration, है ना। तो अब मैं ना यही सेम चीज सब कुछ सेम रखता हूँ। प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, हम टाइम अभी कर लेते हैं 1 ईयर का, ठीक है। तो एक बार जरा आप बताओ कैलकुलेट करके कि अगर हम 1 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ नेहा, सो इन रुपीज कितने रुपीज मिलेंगे आपको? नो शिवम नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट, बेनिफिट कितना होगा आपका, है ना। यस यस गुंजन, यस एब्सोल्युटली। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना प्रिंसिपल है? 1000 रुपीज, राइट। 1 plus r कितना रखना है? 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n, और n कितना आएगा हमारे यहाँ पे? 1, है ना। बिकॉज हम टाइम ड्यूरेशन कितना ले रहे हैं? 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं। तो अमाउंट मिलेगा। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका जो अमाउंट है ये वैल्यू कितनी आती है? 1100, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो वो क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। और अमाउंट आपका हो गया 1100, प्रिंसिपल आपका हो गया 1000 रुपीज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कितना अर्न किया? 100, राइट। यस सेटल, यस राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है? 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना है? 100, है ना। तो फर्स्ट ईयर में ना आपने चाहे कैसे भी डिपॉजिट किया, सिंपल इंटरेस्ट पे किया या कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में ना कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में बराबर है। डिफरेंस स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। ये क्यों होता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड? बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो आपने 100 रुपीज अर्न किए थे, राइट। नो नो नेहा, दिस इज ऑलवेज इक्वल। अगर आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, वो दोनों चीजें सेम है ना, तो आप चाहे कितना ही मनी डिपॉजिट करो, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करो, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर केस में सेम हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रिंसिपल और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, जो आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको जो है सेम बेनिफिट मिलेगा, है ना, फर्स्ट ईयर में। डिफरेंस स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, राइट ना। अब ये जो डिफरेंस होता है ये क्यों होता है, राइट, जस्ट कंसंट्रेट नेहा ओवर दिस। फर्स्ट ईयर में आपने क्या मनी को डिपॉजिट किया है? जो भी आपका प्रिंसिपल है। जैसे हमने यहाँ पे कितना डिपॉजिट किया? 1000 रुपीज डिपॉजिट किया। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी 1000 रुपीज है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1000 रुपीज है। तो जो कैलकुलेशन हो गई वो तो एक ही बेस वैल्यू है ना, 1000 रुपीज, इसलिए मुझे बेनिफिट सेम मिल रहा है दोनों केस में, राइट। अब क्या होता है सेकेंड ईयर के बाद में, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें तो मेरा प्रिंसिपल ही डिपॉजिट रहता है, सिर्फ 1000 रुपीज ही होगा। 100 रुपीज आप निकाल के अपने पॉकेट में रख लो, आप उसको एंजॉय कर लो, है ना।
बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो 100 रुपीज आपने अर्न किए हैं फर्स्ट ईयर में, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। जो भी टाइम ड्यूरेशन है, 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, 2 इयर्स है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन आप लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, उस टाइम ड्यूरेशन पे जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होता चला जाता है, राइट। तो अगर आपने आज 1,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं, है ना, और आप इस मनी को सपोज 30 इयर्स के लिए डिपॉजिट कर दो, राइट, फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स, डन। सो ये क्या होगा, हर ईयर एंड पे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो आपके 1,000 रुपीज में एड अप होता जाएगा, और सब्सिक्वेंट ईयर में जो आपका टोटल मनी डिपॉजिट होगा, है ना, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एंड दिस इज द रीजन के हर टाइम ड्यूरेशन के बाद में आपका मनी ग्रो कर जाता है, आपका मनी इंक्रीज हो जाता है, राइट। एंड दिस इज वी कॉल एज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ही मनी आपका ग्रोथ करेगा, है ना। क्यों? सपोज आप ये देखो, आपने 30 इयर्स के लिए मनी को डिपॉजिट किया, आज आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट किए, है ना, तो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, 1,000 रुपीज पे, है ना। अब ये ऐसे एड अप होते होते 29 इयर्स हो गए, राइट। जब लास्ट में 30th ईयर के लिए मनी कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो जो बेस वैल्यू होगी ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और उस बिग बिग वैल्यू के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो इंटरेस्ट है, बेनिफिट है, वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द रीजन जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था Excuse me, कि जो sir. यस, Can you please explain the last part again? मैंने बोला कि जैसे जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, अभी आपने कितना डिपॉजिट किया, 1,000 रुपीज, 10% का रेट है, आपको बेनिफिट कितना मिला, 100 रुपये। आपको लगा रहे ये तो 100 रुपीज है, क्या बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, 100 रुपीज है ना। बट अगर आप ये देखो कि ये जो 100 100 रुपीज एडअप होते जाएंगे, और ये क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है। आज आपके 1,000 है, नेक्स्ट टर्म के लिए 1,100 हो जाएंगे, फिर और इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज होंगे, जितना भी इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होता चला जा रहा है। और अगर आपने सपोज 30 इयर्स के लिए मनी को डिपॉजिट किया है, राइट, तो जब 29 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एक ना बहुत बड़ा सा वैल्यू बन जाएगा, और उस वैल्यू पे जब आप कैलकुलेट करोगे फॉर द लास्ट 1 ईयर, 30th ईयर के लिए, तो आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा, राइट, बिकॉज आपका बेस वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गया है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अभी हम देख रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, अ लीनियर ग्रोथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट, अ ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है कि ये मनी इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। यस शिवम। सर, इन कंपाउंड इंटरेस्ट कैन वी से दैट कि यहाँ जब हम लोग ये जब नेक्स्ट ईयर होता है, जैसे सर आपने जो ये अभी एग्जांपल बताया था जिसमें 1100 हम लोग का था, ये अमाउंट वेयर 1100, so the next year the interest will be applied on 1100, and yes, now consider if the next year the answer is like 1250, now the interest for the another year will be applied on 1250. yes. तो Okay, जो that's भी it. आप ना हर ईयर में इंटरेस्ट अर्न करते जाओगे, है ना, Yes, sir. वो इंटरेस्ट आपके जो प्रिंसिपल वैल्यू है या जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एड अप होता चला जाता है ना। और आई सपोज दैट कि से यू मस्ट हैव सीन इन योर फैमिली कि जैसे फैमिली में जो पेरेंट्स हैं या कोई और रिलेटिव है जो थोड़ा सा पहले थे, तो उनको ना गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक बेनिफिट देती थी, दैट इज अ प्रोविडेंट फंड। आई सपोज यू हैव हर्ड दिस नेम, PF, प्रोविडेंट PF. फंड। यस, पीएफ, यस पीएफ, है ना। तो उसमें क्या होता था कि जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट ना गवर्नमेंट एक डिपॉजिट करती रहती थी, और Yes, sir. जितना भी वो डिपॉजिट होता था उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती थी, है ना। अब आपका जो सर्विस रहता है किसी भी गवर्नमेंट में, वो नॉर्मली कितना रहता है,
समवेयर अराउंड लाइक 25 years or 30 years, 30 years, yes sir. है ना? तो जब आपने 30 years तक काम किया, वो एक हर महीने एक छोटा छोटा सा वैल्यू जो डिपॉजिट हो रहा है, उस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो रहा है। तो जब आप रिटायरमेंट लेते हो, जब आप ये देखते हो कि अब आपका जो जॉब करने का टाइम वो कंप्लीट हो गया है, नाउ यू आर गोइंग फॉर अ रेस्ट एंड एंजॉय फॉर योर लाइफ, राइट? तो वो जो एक मनी, एक वैल्यू मिलती है आपको, वो बहुत एक हैंडसम, एक बहुत बड़ी मनी मिलती है, राइट? सो दैट यू कैन इजिली लाइक पास ऑन योर लाइफ, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ में, अच्छे से उसको टेक केयर कर सकते हो, है ना? सो इसमें क्या होता है कि देर आर सम इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम बोलते हैं देर इज सम लॉक इन, लाइक आपने मनी डिपॉजिट किया, वो लॉक हो गया, अब वो 10 years, 15 years, 20 years के बाद ही लॉक ओपन होगा, और तब तक आप डिपॉजिट को निकाल नहीं सकते हो, है ना? आप सिर्फ डिपॉजिट ही करते जा रहे हो और इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होता जा रहा है। तो क्या होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के बाद में आपको एक अच्छा वैल्यू मिलता है, जिसको आप जो है किसी भी एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में, मे बी लाइक यू कैन purchase a one big house, you can purchase of like anything, like whatever you want to, you have a good amount of money, right? So this is the benefit of the power of compound interest. और compound interest हमेशा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगा। आज 2 है तो 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, 32, 64, 128। So this is increasing like geometric progression, exponential, right? Okay. So if I compare this diagrammatically, so see here, this is what my simple interest, right? And this is what my compound interest, because simple interest मेरा लीनियर ग्रोथ है, हर महीने मुझे कांस्टेंट बेनिफिट मिलेगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसपे मुझे एक्सपोनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, जो बेनिफिट पहले मिल चुके हैं उन पर भी बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक नॉलेज। आपने 9, 10, 11, 12, है ना, ये सारे स्टैंडर्ड्स को रीड किया, स्टडी किया, एग्जाम दिए, तो अब ऐसा नहीं है ना कि आप वो सब चीज भूल गए हो, आपके माइंड से वो सब चीज निकल गई है, वॉश आउट हो गई है ना? अब जो भी नॉलेज, जो भी स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, वो सब उसके ऊपर है, पाइलिंग अप है, राइट? एडवांस है। सो दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? सो this way you are getting a benefit in the compound interest, exponential benefit, right? तो अगर हम इसको ना थोड़ा सा कंपेयर करके देखें, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल कंपेयर करके देखा था, है ना? तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें आप देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में बेनिफिट कितना हुआ, 100 रुपीज, ठीक है? सेकेंड ईयर में कितना हो गया, एक और 100 रुपीज मिल गया, है ना? नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज, नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज, ऐसे चाहे आपने अगर 10 साल 15 साल कितने भी टाइम के लिए रखा डिपॉजिट करके, आपको हर टर्म पे कितना मिल जाएगा, 100 रुपीज, बिकॉज एवरी टर्म के लिए, हर टर्म के लिए जो आपका डिपॉजिट मनी है जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो कितना है, सेम 1000, है ना? यहाँ पे आपका जो बेस वैल्यू है वो नहीं चेंज हो रहा है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्लियर है, बेनिफिट तो सेम ही होगा, बेनिफिट तो चेंज नहीं होगा, है ना? बिकॉज जिसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब वही चेंज नहीं हो रहा है तो बेनिफिट कैसे चेंज होगा, राइट? सो सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट अ लीनियर प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे मेरा बेनिफिट कांस्टेंट है ना? ना अब हम आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या हुआ, आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में 10% का रेट आ गया, आपको 100 रुपीज का बेनिफिट हो गया, इंटरेस्ट मिल गया, है ना? आपने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखता हूँ और मैं इसको बैंक से विड्रॉ नहीं करूंगा, राइट? तो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1100 के ऊपर कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपके 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो गए जो फर्स्ट ईयर में आपने अर्न किए थे, है ना? जब सेकंड ईयर में कैलकुलेट कर रहे हो, तो सेकंड ईयर में देखो यहाँ पे आपने क्या क्या लिया, आपका एक तो 1000 रुपीज है जो बेस प्रिंसिपल है, जो पहले से ही डिपॉजिट था,
प्लस आपने एक 100 रुपीज और अर्न कर लिया फर्स्ट ईयर में, है ना। ये जो इंटरेस्ट था ये आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 110। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10%। तो जो बेस प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, उस पे आपने कितना अर्न किया? 100 रुपीज, जो पहले से ही हम अर्न कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में भी ये अर्न किया था। प्लस जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया उस पे भी मेरे को अब इंटरेस्ट मिल गया, तो 10 रुपीज और मिल गए। तो मेरा जो टोटल बेनिफिट हो गया सेकेंड ईयर का वो कितना हो गया? 110। तो यही मैंने अभी आपको बोला था कि जो फर्स्ट ईयर होता है, अगर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज सेम है, तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपका बेनिफिट इंटरेस्ट सेम होगा, बराबर होगा। डिफरेंस स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, राइट नेहा? क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हम निकाल के अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ये सब चीज हमने निकाल के एंजॉय कर लिया, तो घुमाए, है ना, बेनिफिट पर लेके। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमने क्या किया? उस बेनिफिट को मैंने वापस से ऐड कर दिया अपने प्रिंसिपल, है ना। मेरे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसको अच्छा बनाना है, मेरे को मनी स्टोर करके रखना है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया? उसको ऐड कर दिया। तो अब उसको ऐड कर दिया तो अब उस पर भी इंटरेस्ट आएगा, है ना। So this way we are earning a subsequent money in the subsequent years. और जितना टाइम लंबा होता है, जितना टाइम बड़ा होता है, उतने ही बेनिफिट आपके ज्यादा हो जाते हैं, राइट? गॉट इट? So this is the difference between a simple interest and the compound interest, and this is the reason every time everybody is saying that कि मनी आप सेव करके रखो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करके रखो। और उसको कैसे करना है? भले ही आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स पे सेव करो, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, बट टाइम ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए। और जो आपका सेविंग है वो आपके अर्ली एज में स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो भी यंग जनरेशन है ना, उनको यही एडवाइस, यही सजेशन होता है कि एक तो आप जो है सेविंग्स अपना समवेयर अराउंड लाइक 25 ईयर्स के आसपास शुरू कर देना चाहिए आपको। भले ही आप छोटा करो बट स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड दूसरा, टू सिक्योर योर लाइफ यू शुड हैव अ वन टर्म प्लान, राइट। टर्म प्लान, उसमें भी बेनिफिट होता है, जितना आप जल्दी से टर्म प्लान लेते हो उतना ही आप उसका प्रीमियम, जो हम हिंदी में बोलते हैं किश्त, राइट, प्रीमियम, वो आप कम देते हो और उतने ही बेनिफिट आपके एड अप होते चले जाते हैं जितना आपका लंबा टाइम ड्यूरेशन है, राइट। तो अभी आई सपोज आप लोग देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, टेक से 1 करोड़ टर्म प्लान, 2 करोड़ टर्म प्लान, राइट। ये सुनो, यू कीप वॉचिंग ऑल दीज न्यूज, थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्ल्ड में थोड़ा सा ध्यान देते हो, एंड आई सपोज सम ऑफ यू मस्ट हैव स्टार्टेड सेविंग्स, और ये सब आपने थोड़ा सा शुरू किया होगा या नहीं? Good, good, Aman. Good. Yes, someone is saying yes. Right. Yes. Yeah. Isha is also saying yes. Okay. So, uh, yes, Shivam. Yes. So there are various different personalities who are advertising for a different financial instruments, right? But देखो, उनका जो भी ना एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आते हैं, उनका तो काम है एडवर्टाइजमेंट करना, और उनका जो लाइफ है वो सिक्योर है, राइट शिवम? तो उनको तो ये सब बेनिफिट या सेविंग्स में डिपॉजिट करना या एफडी में डिपॉजिट करना या इंश्योरेंस लेना, राइट, उनके लिए तो बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। बट एज वी आर द पर्सन, राइट, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी आर हैविंग सम फैमिली ऑब्लिगेशंस, राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जो भी है, एडवर्टाइजमेंट अपनी जगह है, बट कुछ भी करने से पहले कहीं भी आप सेविंग कर रहे हैं, कोई आप इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, राइट, आपका अपना पर्सनल कैलकुलेशन भी होना चाहिए कि आपको उसको यस करना है या नो करना है, राइट। सो आरुष, रिकरिंग डिपॉजिट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट तो बेनिफिट है जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट। अब जो डिपॉजिट कर रहे हो उसमें ना अलग अलग तरीके के मेथड हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि सपोज आपके पास में थोड़ा सा बल्क मनी है, राइट, यू हैव सपोज 1 लाख रुपीज। तो आपने क्या किया, एक साथ 1 लाख रुपीज जो डिपॉजिट कर दिया, एंड नाउ यू आर सिटिंग रिलैक्स कि मैंने तो डिपॉजिट कर दिया, 20 ईयर्स के लिए डिपॉजिट है, अब 20 साल के बाद देखेंगे, है ना। सो यू आर रिलैक्स, राइट। बट क्या होता है कि बिकॉज यू आर स्टडिंग, फैमिली ऑब्लिगेशन, एक्सपेंसेस भी हैं, सब चीजें हैं, राइट। मे बी सम ऑफ यू आर रिजाइडिंग ऑन द रेंट, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इस तरह से देखनी है, राइट। तो जब आप उस सब को देख रहे हो तो आप एक साथ ना बल्क मनी स्पेयर आउट नहीं कर पाते, आप ना बल्क मनी एकदम से नहीं निकाल पाते। तो क्या करते हो कि आप ना छोटा छोटा करते हो, चलो मैं 1 लाख रुपए तो नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ 500 रुपीज कर देता हूँ। तो 500 रुपीज अगर आपने मंथली कर दिए तो ये क्या हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट। और इसके लिए स्टार्ट में जैसे हमने डिस्कस भी किया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। तो वो नॉमनक्लेचर डिफरेंट है, कहीं पे कोई वर्ड्स यूज होते हैं, कहीं पे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, बट द बॉटम लाइन इज आई शुड सेव द मनी, आई शुड हैव द सिक्योर फ्यूचर, राइट। So Vijayant is saying all those guys who read the terms and condition at class, they will please say yes to investment in. Yes, yes. बट विजन थोड़ा सा ये होता है कि जो भी आप सेविंग्स वगैरह करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, लोन लेते हैं, तो उनमें ना टर्म्स एंड कंडीशन बहुत माइन्यूट होते हैं और थोड़ा सा वो लीगलाइज्ड लैंग्वेज होती है जो हम कई बार नहीं समझ पाते हैं, है ना। बट आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, गूगल है, यूट्यूब है ना, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इन सबको काफी अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो अगर आप वहां पे नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम डिवोट करना है और उसको थोड़ा सा रिसर्च करना है और सिंप्लीफाइड वर्जन आइडेंटिफाई करना है, राइट। इजिली समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं है तो आप अपने घर में जो सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एल्डर ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करो, फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस करो, है ना। तो बिकॉज ये सब कौन है, ये आपके वेल विशर्स हैं, ये कभी ना आपका बुरा नहीं चाहेंगे, है ना। बट अगर आप रैंडमली कहीं पे जाके कोई एजेंट है या कोई भी इस तरह का पर्सन है, तो उसको तो जो है ये है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, है ना। ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द प्रोडक्ट। जस्ट लाइक आप शॉप पे जा रहे हो, आप टॉफी है, चॉकलेट है, ब्रेड है, बटर है, आप परचेज कर रहे हो, तो ये भी एक प्रोडक्ट ही है ना। आप किसी भी शॉपकीपर से, जो भी एजेंट है, आप पूछोगे, वो तो हमेशा ये बोलेगा आप मेरे से लो, मेरी चीज सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है, राइट। बट यू शुड आस्क डिस्कस विद सम न्यूट्रल पर्सन। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, वो आपको हमेशा अच्छी से अच्छी एडवाइस करेंगे, वो अच्छे से समझाएंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है उन्होंने कभी लॉस बियर किया होगा, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप ऐसा काम करो, ऐसा मत करो, है ना। तो वो सारी चीजें वहां पे इजिली एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, राइट। So this was okay. Sum of money doubles itself at a rate of interest in 7 year time, right? आपने कुछ मनी डिपॉजिट किया और वो मनी डबल हो जाता है कुछ एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने टाइम में, 7 years के टाइम में, राइट। नाउ इन
how many years it will be 8 times if deposited at number 1 simple interest and number 2 compound interest. हाँ जी, एक कुछ पैसा है आपके पास में, कुछ मनी है और आपने उसको डिपॉजिट कर दिया। अब वो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7 इयर्स में वो मनी डबल हो जाती है ना, जो भी आपने डिपॉजिट किया उसका डबल हो जाता है 7 साल में उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अब मुझे ये बताना है कि कितने टाइम में ये मनी 8 टाइम्स 8 गुना हो जाएगी, राइट, इफ आई डिपॉजिट दिस एट सिंपल इंटरेस्ट और इफ आई डिपॉजिट दिस एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, so give me the answer for this. You can give the answer in the chat box or you can unmute yourself to discuss your logic, your idea, if you are not getting any figure. Okay. So, Arush, okay. Vishan, okay. Pratishka, okay. Okay. Pratishka, okay. Sarthak, okay. Okay. Okay, so Sarthak, how is this your answer? Hi, sir. Am I audible? Yes, yes, Sarthak, yes. Sir, I took principal as 100, and when my principal is 100, after 7 years, my amount will become 200. So my simple interest will be 100 since my amount is 100 and is 200 and my principal is 100. So it will become, my simple interest will become 100. So since my time is 7 years and R being my rate of interest, after calculating, my rate of interest will come as 100 by 7%. And when I'm talking about 8 times my principal, so in that case, my simple interest will become 700. And after calculating it, my time is coming as 49, which is a very big time. So I think I'm wrong. नहीं, this is correct. 49 years is the correct answer. Right. तो यही एक ना ड्रॉबैक होता है साथ है जब भी हम अगर सिंपल इंटरेस्ट पे करते हैं, बिकॉज आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो पे क्या देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लीनियर मैनर में है ना। तो लीनियर मैनर में है तो छोटा छोटा बेनिफिट मिलेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में ना आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बेनिफिट बहुत जल्दी से अर्न कर लेते हैं, राइट। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या था। दिस इज प्रिंसिपल इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब मेरा प्रिंसिपल कितना है, आई डू नॉट नो कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल इज टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दिस इज सम सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 7 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब क्या होता है यहाँ पे कि क्या बोला, अ सम ऑफ मनी डबल्स। तो अगर आपने P डिपॉजिट किया है ना, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2P, है ना। अब ये देखो यहाँ पे मैंने 2P क्यों रखा, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये मुझे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, सिर्फ इंटरेस्ट देता है। तो अगर मैं 2P रखूंगा तो 2P क्या है, प्रिंसिपल और प्लस व्हाट, इंटरेस्ट, है ना। तो हमें इसको क्या करना होगा, दिस शुड बी इक्वल टू ओनली व्हाट, इंटरेस्ट, है ना। कैसे,
सपोज आप यहाँ पे देखो, अगर आपने P रुपीज डिपॉजिट किया है ना, कितना टाइम है, 7 years का टाइम है आपके पास में, राइट, तो आपको कितना मिलेगा, 2P, जितना भी डिपॉजिट करो डबल हो। अब इसमें क्या हो रहा है, P तो आपका प्रिंसिपल है ना, और बाकी का जो P है वो क्या है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूले में हमें क्या रखना होगा, सिंपल इंटरेस्ट रखना होगा। तो ये P और ये P कैंसिल हो गया, और यहाँ से जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, दिस इज 100/7%। ठीक है, अब क्या होता है आगे कि अगर मैं P रुपीज डिपॉजिट करता हूँ, सो देयर विल बी सम T years, और इसमें मुझे कितना चाहिए, 8P, 8 गुना, राइट, 8 टाइम्स। इसमें क्या होगा, P तो मेरा फिर से क्या होगा, प्रिंसिपल, राइट, और बाकी का जो 7P है वो क्या है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट, राइट, गॉट इट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 7P इज इक्वल टू व्हाट, P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, 100/7, राइट, इनटू टाइम T निकालना है, डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है, राइट। सो P एंड P कैंसिल हो गया, 100 एंड 100 कैंसिल हो गया, और आपका जो T है, टाइम पीरियड है, कितना आ गया, 7 × 7, 49 years, राइट, गॉट दिस, 49 years, yes everyone। सो सेजल, बेसिकली फर्स्ट मैंने क्या किया कि जो ये वाला फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये आपको क्या देता है, ये आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताता है, राइट, सिंपल इंटरेस्ट बताता है, राइट। अपूर्वा, ये देखो क्या बोला है, मैं अभी यहाँ पे ना आपको नंबर्स पे लेके दिखाता हूँ। सपोज आपने अगर 100 रुपीज डिपॉजिट किए, कितने टाइम के लिए, 7 years के लिए, तो आपको कितने मिलेंगे, 200, है ना। 200 में क्या होगा, 100 तो आपका प्रिंसिपल है जो आपने डिपॉजिट किया, और 100 बाकी का क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है, राइट अपूर्व, गॉट दिस। तो अब जो फॉर्मूला है वो आपको इंटरेस्ट ही देता है, सिंपल इंटरेस्ट देता है, तो आप कितना रखोगे, ये 100 सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट, है ना। अब सेकेंड केस में क्या करना है, 100 रुपीज है, मुझे टी टाइम के लिए चेक करना है कि टी टाइम में कितना होगा, कितना चाहिए, 800 रुपीज। तो 800 रुपीज में जो 100 है वो तो मेरा प्रिंसिपल ही होगा, और बाकी के जो 700 है वो क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा, राइट। तो फिर मैंने सेकेंड केस में क्या किया, उसको 7P के बराबर रखा, राइट। तो जो अपर पार्ट है वो तो मेरा फॉर्मूला बेस्ड है ना। बट जैसे हम बात करते हैं कि जो भी अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ना थोड़ा सा लॉजिकली आप सॉल्व करोगे तो बहुत फास्ट सॉल्व होते, कैसे देखो, ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना है। अगर मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट किए तो 7 years में मुझे कितना बेनिफिट मिलता है, 100 रुपीज का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज, है ना। अब 100 रुपीज डिपॉजिट करके मुझे बेनिफिट कितना चाहिए, 700 रुपीज का, है ना। तो जो पहले बेनिफिट मिलता था उसका अभी कितना हो गया, कितना बेनिफिट है, 7 टाइम्स का बेनिफिट है। पहले अगर मुझे 100 रुपीज बेनिफिट मिलता था तो अभी कितना बेनिफिट है, 700 रुपीज है, 7 टाइम्स का बेनिफिट है, राइट। तो अगर आपको पहले 100 रुपीज अर्न करने में 7 years का टाइम लगता था, तो अभी क्या होगा, जो भी पहले टाइम लगता था उसका क्या करना है, टाइम को 7 टाइम्स कर देना है ना। तो 7 × 7 कितना टाइम आपको चाहिए, 49 years, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर लॉजिकली मैंने सॉल्व किया, जस्ट लाइक विद इन से 1 minute ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गॉट इट। पहले 100 रुपए का बेनिफिट था, अभी 700 रुपीज का बेनिफिट है, बेनिफिट कितना हो गया, 7 टाइम्स का बेनिफिट हो गया।
100 रुपीज का बेनिफिट आता था 7 ईयर्स में, तो 700 का दैट इज 7 टाइम्स का बेनिफिट कितने टाइम में आएगा? 7 into 7 49 ईयर्स में। टाइम को भी मैंने 7 टाइम्स कर दिया, है ना? व्हाट दिस? ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट, है ना? अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 plus r divided by 100 raised to power n। प्रगति हम कर सकते हैं 8p के इक्वल, बट वो जो ना एक्स्ट्रा p ऐड होगा ना, तो उसको फिर सॉल्व करना होगा और आपका कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, राइट? बिकॉज फिर आप क्या करोगे, p को कॉमन लोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे, राइट? तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो अननेसेसरी उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करें जब हम इजीली कर सकते हैं, राइट? ना, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मुझे क्या बताता है? अमाउंट, और अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना? तो जो अभी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, दैट इज दिस। हाँ, तो इसमें देखो आप, आपका प्रिंसिपल कितना है? p, और आपको मिलता कितना है? 2p, जिसमें p आपका प्रिंसिपल है और p आपका सैंपल इंटरेस्ट है। बट अभी हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो अमाउंट मिलता है, तो इसको हम क्या करेंगे? दिस शुड बी इक्वल टू 2p अमाउंट, बिकॉज p इज द प्रिंसिपल, p इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? तो अब अमाउंट रखेंगे, शुड बी इक्वल टू व्हाट? p 1 plus r divided by 100 raised to power what? 7। ये p और ये p कैंसिल हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है? अब सेकेंड केस में क्या आप कर रहे हो? प्रिंसिपल तो आपको वही है ना? अब आपको कितना चाहिए? 8p चाहिए, तो आपने क्या किया? दिस इज 8p इज इक्वल टू p, है ना? 1 plus r divided by 100 raised to power n। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया, और p एंड p तो कैंसिल कर सकते हैं इजीली, है ना? अब ये देखो, जो 8 है ना, 8 8 क्या है? 2 क्यूब, है ना? 8 इज व्हाट? 2 क्यूब। और इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को 2 का वैल्यू पता है कि 2 का वैल्यू कितना है ना? तो इक्वेशन नंबर 1 से हम 2 का वैल्यू रख देते हैं, राइट? यस शुभम, यस यस करेक्ट। तो 2 का वैल्यू कितना है आपको? दिस इज 1 plus r divided by 100 raised to power 7 and whole raised to power what? 3, है ना? 2 का वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया, यस सार्थक, यस करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट? इक्वल टू 1 plus r divided by 100 raised to power n। बेस तो सेम हो गया, अगर बेस सेम हो गया, आप पावर्स को इक्वेट कर दो, तो आपको क्या मिला? n इज इक्वल टू 7 into 3, कितना टाइम? 21 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका जो मनी डबल होता है उसमें कितना टाइम लगता है? 49 ईयर्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको टाइम कितना लगता है? 21 ईयर्स, है ना? तो ये बेनिफिट देखो कितना है हमारा, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना? अब इसमें भी जो है शॉर्टकट है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? अब ये देखो, ये ध्यान रखना है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में मेरा बेनिफिट अलग हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बेनिफिट ऐड हो जाता है ना? जो बेसिक फंडामेंटल है दोनों। अब सपोज आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किए, अब जितना भी डिपॉजिट करते हैं ये हमें पता है कि 7 ईयर्स में वो डबल हो जाता है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी है। अभी हम उनको निकाल नहीं रहे हैं इसमें, है ना? आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किए, तो आपने क्या किया? इसको 7 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया, कितना हो जाएगा? 200 रुपीज, है ना? अब इस 200 में क्या है? आपका 100 रुपीज तो प्रिंसिपल है, और बाकी का जो 100 रुपीज है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट केस कंपाउंड इंटरेस्ट का है,
तो टोटल मनी डिपॉजिट करके रखेगी, है ना। 7 ईयर्स के बाद आपको ये मिल गया 200 रुपीज। आपने क्या किया, ये जो टोटल 200 है ना, इसको फिर से जो डिपॉजिट कर दिया 7 ईयर्स के लिए, क्योंकि ये तो पता है ना 7 ईयर्स में डबल हो जाता है। तो 200 का कितना हो जाएगा, 400, है ना। आफ्टर वन मोर साइकिल ऑफ 7 ईयर आपका जो मनी है वो कितना हो गया अभी, 400 रुपीज। अब आप क्या करते हो, आप ना इसको फिर से एक बार जो डिपॉजिट कर देते हो, कितने टाइम के लिए, 7 ईयर्स के लिए। आप कितना हो जाएगा, डबल, 800 रुपीज। सो टोटल कितना हो गया, 7 + 7 + 7, आपका आंसर कितना आ गया, 21 ईयर्स। सो सिंपल, सो इजी, राइट। तो ये ना देखो, जो अरिथमेटिकल पार्ट है ना, अगर हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा उसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं, तो हम क्वेश्चंस को बहुत फास्ट और बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, और कैलकुलेशंस तो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया दोनों में करके कि कैसे हमारे कैलकुलेशंस जो है बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो गए। If you want, you can take a screenshot of this. Yeah. Hello, sir. Good evening. Yes, Vijay. Yes, good evening. Sir, like the way you approached in compound interest, like after 7 years, it is getting doubled, no? So, like the same way, why can't you like interest can be done with the same way, no? Like I'm having trouble understanding Same this. way, Like the same short way form. means what? Not getting you your logic. Same way means Like so anyway, in the simple interest also, the money is getting doubled, right? हाँ, नहीं वही मैंने बोला ना, यहाँ पे देखो, money is getting double in both the ways, in simple interest and compound interest, right? But the basic fundamental difference क्या है यहाँ पे? In a simple interest, your interest, your benefit is not added to your principal, है ना? और in the compound interest, your benefit is added to the principal. तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मनी इंक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट में मनी इंक्रीज होता है वो लीनियर इंक्रीज होता है ना। तो अभी जब सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आप क्या कर रहे हो कि जो प्रिंसिपल है उसी पे बेनिफिट आया, बाकी आपने सब हटा दिया है ना। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो instead of 400 that will be 300 then. यस, नो, Yeah, so I नॉट get it. 400, इन अ सिंपल इंटरेस्ट दिस इज ओनली 100। जितने भी 7 इयर्स के साइकिल होंगे, Okay, but उसमें like जो amount, इंटरेस्ट like कैलकुलेट, you are calculating the amount, no? In the हाँ second अमाउंट, way, you are calculating the बट amount. जो अमाउंट तो So होगा, that will है be ना, 300. अमाउंट होगा। बट जो बेनिफिट आप अर्न करोगे वो बेनिफिट तो प्रिंसिपल पे ही अर्न करोगे, और बेनिफिट जो प्रिंसिपल पे अर्न होगा तो सिंपल इंटरेस्ट में तो वो 100 रुपीज ही होगा, है ना। हर बारी 100 रुपीज ही डबल होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले 100 का 200 हो गया, 200 का 400 हो गया, 400 का 800 हो गया, Yes, we get राइट, it. Yeah, गॉट इट। thank you. Yes. सर इन एसआई जो ये फॉर्मूला है पीआरटी बाय 100, दिस इज इंटरेस्ट। पीआरटी, हाँ ये इंटरेस्ट बताते हैं ना। ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्या देता है, इंटरेस्ट की वैल्यू देता है, आपका बेनिफिट कितना है। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पे अमाउंट बताता है कि आपका अमाउंट कितना है, राइट। इसीलिए डिफरेंस, यस, इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इक्वल किसके किया है, पी के इक्वल किया है, और यहाँ पे किसके इक्वल किया है, 2p के इक्वल किया है, राइट। नाउ महिमा, हाँ यस, इन दिस केस मतलब सर वी कैन सॉल्व ऑल दिस विदाउट द फॉर्मूला आल्सो, ठीक है, फॉर्मूला इज ओके सर, बट क्योंकि फॉर्मूला पावर्स इज ओके, बट हाँ, बट यही है ना कि सीआई में फॉर्मूला पावर आप है तो लगाओगे कॉम्प्लेक्स तो होगा। यस कॉम्प्लेक्स होगा, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम फॉर्मूला लगाएं और उसको सिंप्लीफाई करें, है ना। और ये देखो जो महिमा ने बोला कि अगर यहाँ पे 9 होता, 8 टाइम्स की जगह 9 टाइम्स होता तो क्या करते, है ना। तो इसमें ना क्या होता है कि जो एग्जामिनर का जो पर्पस है ना,
वो आपको कैलकुलेशन कराने का कभी नहीं होता है, बिकॉज बीइंग अ मैनेजर जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे एंड यू विल बी वर्किंग एज अ मैनेजर, राइट, तो वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के अब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आपको वैल्यूज फीड करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो कैलकुलेशन आपको कभी नहीं करना, वो सब सॉफ्टवेयर आपके लिए करेंगे, राइट। बट ये देखो, जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, ये जो सब चीजें हैं ना, ये सब मशीन्स हैं, और इनको चलाने के लिए हम लोग, लाइक वी ह्यूमन बीइंग, वही है ना। तो जब तक आप उसमें एक करेक्ट फॉर्म ऑफ डेटा फीड नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, है ना। और डेटा क्या फीड करना है और क्या नहीं करना है, ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं करेगा, ये तो आप ही डिसाइड करोगे, राइट। तो एग्जामिनर का जो पर्सपेक्टिव है ना, ये टेस्ट करने का, कैट, जीमेट, सीईटी एक्सेट्रा, जो भी एग्जाम है, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, इनको करने का पर्सपेक्टिव है कि आप लॉजिकली किसी भी आस्पेक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे परसीव करते हो, कैसे उसको अप्रोच करते हो, राइट। कैलकुलेशन तो बात की बात है, पहले तो मुझे ये देखना है कि हम उस प्रॉब्लम को लॉजिकली कैसे अप्रोच कर रहे हैं, राइट महिमा। तो उसमें अगर जैसे 9 होगा, तब तो फिर फॉर्मूला है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, राइट, कोई रास्ता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, राइट। बट लॉजिकली मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एग्जामिनर हमेशा ये टेस्ट करेंगे आपसे, Okay, sir. राइट, Got it. Got it, राइट। sir. Thank you. So Tatishka is saying in CI principal double, so amount will double. नहीं 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 तिशिष्का, प्रिंसिपल डबल नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल ना प्रीवियस टर्म के लिए डबल हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो डबल हो रहा है, राइट। बिकॉज जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और ऐड हो जाता है तो हम उसको जो है कंसिडर कर लेते हैं कि ये मेरा प्रिंसिपल बन गया, है ना। बट जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो तो वही रहेगा, राइट। बट जब एड अप होता चला जाता है तो जस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर आपका प्रिंसिपल डबल हो जाता है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस, राइट। So what happens is that suppose if I say that A can do a work in 4 days and B can do the same work in 6 days, and they both start working together, or no, not together, they both start working alternatively. It's like on the day one, on the first day, A will come, on the second day, B will come, on the third day, C will come, on the fourth day, on the third day, A will come, on the fourth day, B will come again, on the fifth day, A will come again, on the sixth day, B will come again, and so on. Okay, this is the way the work is going to be completed. Okay, A can do a work in 4 days, B can do the same work in 6 days. They work in an alternate fashion, that on one day A will work, on the another day B will work. Okay, so you have to calculate in how many days the work would be completed in this fashion. Okay, so what we do is we take the total work as something. Okay, suppose I take the total work as 12 units, the LCM of 4 and 6. Okay, and their efficiencies would be 3 units and 2 units per day. Okay, so this is the general thing that we need to do in all the questions. Okay, right, now on the day one, A will come and will complete its 3 unit. Okay, on the second day, B will come and will complete its 2 unit. Okay, so in a cluster of 2 days, total 5 units of work would be done.
right? On day 1, A comes and completes its 2 units, 3 units. And then on the day 2, B comes and completes its 2 units. So this is a cluster of 2 days in which A and B complete 5 units of work total. Okay. So 5 units of work is done in the first section, first cluster of the time. And then 3 units again, and then 2 units again. So 5 more units of work is done. I hope you can see this. Okay. So till this point, till 4th day, we have completed 10 units of work. Okay. I hope you can see this. Till 4th day, we have completed 4 units of work, 10 units of work. And for the 5th day, we are only left with 2 units. And on the 5th day, A will come to work. Okay. It is all practical. You can imagine. On the day 1, A will come. On the day 2, B will come. This is very practical thing. And this is one question I'm solving with the unitary method, and I'm filling the work manually. Okay. So on the day 5, A will come and will complete its 2 units. Okay. But the thing is that A can do in a day, A can do a complete 3 units, a total of 3 units. So for this 2 units, he will not take the complete day, right? For this 2 units, he will take only 2/3 of the day. Okay. So if I ask you in how many days the work has been completed, so you will say that this is what, first day, second day, third day, fourth day, and 2/3 day more. So this would be 4 2/3 days. Is this clear, students? How did you got 2/3? Arka, dekho. Till this point, 10 units of work is done, right? 10 units of work is done. So how much work is left out of the 12? 2 units, right? Then for 2 units, on the 5th day, A will come, right? B will not come, A will come only. And A can do 3 units in the entire day, right? A does 3 units in the entire day. So A will only take 2/3 of the day, because he only needs to do 2 units. He doesn't need to do the complete 3 units. So that's how we got 2/3. Anyone else want to ask anything in this? Anything that is not clear? In many questions, it is after how many days does the work get completed? And options are either 4 or 5. So should we choose 5? It doesn't happen generally, Krishnan, that you have 4 or 5 as the option, right? You should have 4 2/3 as one of the option. Okay. But in case it happens, so you should select 5, right? Because anyway, the 5th day is taken. The 5th day is involved. Okay. All right. By this method, can you do one more question? If I say A can do a work in just a second.
Just a second, students. A can do a work in 8 days and B can do the same work in 12 days. Right? Can you solve this question? If they start working alternatively, that means A, B, A, B, A, B, and so on. Okay, in this fashion. So how long will it take to complete the work? Please do this question. A can do a work in 8 days, B can do the same work in 12 days. I don't think it would exactly be 9.5. Okay. So you all have given me the answer as 9.5, 9 by 2. But I still have some doubt in this. I don't think the answer should be 9.5. Okay. All of you have given me the answer as 9.5. Let me see. If I take the, what do you have? Yes, A is the first person to work. The total work is 24 units. That's what you must have assumed. So A does 3 units per day and B does 2 units per day. Okay. What I think, yeah, it may be correct. So on the day 1, these are the efficiencies. On the day 1, A will come and will complete its 2 unit, 3 units. Yes, Aditya, correct. Right, everyone's correct. And then B will come. Have you done it manually? Up to 9.5 days, have you gone like this? If you have, then you have to generalize it. You don't have to use this structure every time. Okay, so suppose we have this as in 2 days, we complete 5 units of work. In 2 days, 5 units of work. In 4 days, 10 units of work. In 6 days, 15 units of work, and so on. This will go on like this. So in a cluster of 2 days, we have got 5 units of work done. Okay. So by what we should multiply so that the work remain less than 24? I can multiply it by 4, right? So that we can say that in 8 days, we have got 20 units of work done. Okay. So from the next question onwards, you try to do it this way. You try to multiply this work with a factor such that it remains less than it becomes maximum, but it remains less than the total work that has to be done. Okay. So in 8 days, we complete 20 units of work. Okay. Then for the remaining 4 days, then for the remaining 4 units of work, on the 9th day, A will come and will complete its 3 unit.
still 1 unit is remaining. Still 1 unit is remaining. So on the 10th day, B will come and will complete 1 unit in half a day. Okay, this day will not be taken completely. This would be taken half only. Enough? So in total, how many days have been taken? So 8 complete days, then 1 more day, and then half more day. So that becomes 9.5 days. Tell me if you're not able to do this. Tell me quickly. Yes, students. Anything that you have not understood in this, students? I hope you have understood this multiplying factor 4. Why we have multiplied by 4? Okay. Next question. A can do a work in 15 days and B can do the same work in 25 days. If they both start working alternatively, how long will they take to complete the work? Do this also quickly. Nikhil wrong. Shiva wrong. Krishnan correct. Jyoti Prakash wrong. Arka wrong. Shiva Prasad correct. Laura wrong. Vijay wrong. सिद्धार्थ इसको सॉल्व करो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताओ। Mixed fraction students, yes, Siddharth, correct. Arka, mixed fraction.
नहीं, R का wrong. Nikhil correct. Yes, Vijay correct. Yes, Jyoti Prakash correct. All right, so the final answer is 18 3 by 5. Do I need to solve this? 18 3 by 5 days. Let me know who is still not able to reach this answer. Okay. Arka, the only thing that you have done wrong is you haven't multiplied the days part with 2. You know? Anyone else want me to solve this? Okay. So I'm assuming that this is done. Right. Let me give you a tougher question. A can do a work in 60 days. Laura, the answer is 18 3 by 5 days. I think you must have given me the answer 9 3 by 5. No? So the only mistake that you have done is you have not multiplied the days with days twice. So 9 into 2 should have been done because this is alternate work. No? So that work would be done in 2 days. The 1 day work would be done in 2 days. Okay. A can do a work in 60 days. B can do the same work in 45 days. And C can do the same work in 30 days. If they all start working alternatively with A starting first. So that means they are working in a way A, B, C, then A, B, C, and so on. Okay. So tell me in how much time the work would be completed. Please do. If I talk about the efficiency, so that would be 3 units, 4 units, and 6 units. Okay. In a total of 3 days, they are doing 13 units. Okay. In a total of 3 days, because A is coming, working on the day 1 and completing 3 units. B is completing 4 units and C is completing 6 units. And by what multiplying factor I can multiply this complete equation to get a work which is less than 180. So 13 into 13 is 169. That's what you are getting just before 180. So 13 into 13 is 169. So I'll multiply it by 13. So I'll get 169 units of work done here. Okay. And here it would be 3 into 13. So that's 39 days. Always remember to multiply this also. Right. Some of you are doing this mistake that you're not multiplying this left hand side. That should not be done. That should not be missed. Okay. So 39 days and a total of 169 units of work is done. We are left with only 11 units of work. So for that 11 units of work, we have A coming first and completing 3 units in a day. Okay. Then 8 units are remaining. B will come and will complete it 4 units because B is doing 4 units per day.
So total 7 units of work is done. Now for C, only 4 units of work is remaining. Okay. Okay, Aditya, I'm specially solving it for you. Most of the other people have already given the answer. Manish, तुमने भी आंसर दे दिया? तुमने नहीं दिया मनीष आंसर. तो नहीं आया क्या ये? I think तुमने पिछला भी आंसर नहीं दिया था. So in 11 units of this work, okay, A completes its 3 units. B will reply क्या होता है मनीष? अभी तक मतलब आंसर तो अभी आना चाहिए था ना. ठीक है. Obviously you should add the answer. So A in the in one day completes 3 units. B in the next day, on the next day, completes 4 units, and C is left with only 4 units of work, but in the complete day he can do 6 units of work. Okay, so he'll take only 4/6 of the day to complete the remaining work. He'll not take the complete day. Okay, so in how many days the work has been completed? This is 39 days. This is 1 day. This is another day, and then 4/6 day. So this will become 41 4/6 days. That's the final answer. I mean, you can cut this. So this becomes 41 2/3 days. Okay. Okay, Aditya. I hope this is clear. Moving to the next one. Now comes the group work. I'll take an actual question for group work, because the data is important in that. Like we have question number 15. Six men and 5 women in 6 days, 3 men and 4 women in 10 days. 6, 5, 6, 3, 4, 10. So the question is that a group of 6 men and 5 women can do a work in 6 days. And there's another group of 3 men and 4 women who can do the work, who can do the same work in 8 days. Okay. So the question may ask anything, right? They can give you any equation and will ask you to solve the same. So if I ask you something like that 2 men and 3 women will take how many days to complete the work, right? Or I can ask you that 10 men will take how many days to complete the work, or something like 20 women will take how many days to complete the work, or any of the question can arrive, right? It doesn't matter what's the final question is. You have to follow the same steps. Okay. I can also ask you something like
20 men and 15 women can do the piece of work in how many days, and so on. So any of these question can arise, right? And all would be solved by the same thing, same method. First, focus on these two on the left hand side. Tell me that 6m plus 5w can do the work in 6 days, 3 men and 4w can do the work in 10 days. It is something like this. Can we just equate it? Is it fine that we make the equations like this? Is this valid? Right, Shiva, correct. Right, Nikhil, correct. Right, Krishnan, correct. I asked you that can we equate this these two equations like this? 6m plus 5w equal to 6, 3m plus 4w equal to 10. So the answer is no, we can't. We can't equate these equations, okay? And if we can't equate these equations, what do we need to do? Okay, so if we can't equate this equation, see, why can't we equate? Why can't we equate? Because if we have taken the efficiency of one man as M and efficiency of one woman as W. Efficiency of one man is M and efficiency of one woman is W. Okay. So what happens is that 6M represents the efficiency of 6 men, right? That in one day, 6 men can do 6m units of work. And in one day, 5 women can do 5w units of work. Okay. And in total, if we combine both of them, so 6 men and 5w is the one day work of 6 men and 5 women. 6m plus 5w is the one day work of 6 men and 5 women. All right. One day work of 6 men and 5 women. Okay. And 3m plus 4w is also the one day work of 3 men and 4 women. Okay. So I need to treat it as group. This is, it's like this is a group A. Okay, I can't equate it to the number of days. This is the efficiency
of 3 men and 4 women. And these are the number of days. This is the efficiency, and these are the number of days. Okay, so these can't be equated. Okay, obviously this is work. This on the left hand side it is work, and on the right hand side it is days. They shouldn't be equated. Okay. Okay, so so how do we do it? Just take this as group A and this as group B. Okay, so you can do like A can do a work in 6 days and B can do the same work in 10 days. A can do a work in 6 days, B can do the same work in 10 days. Okay, so how will you deal with this? Right, that's the first question that we did in time and work. A can do a work in 6 days, B can do the same work in 10 days. How do we deal with this? We used to take the LCM, the total work, as 30 units, right? And the per day work would be something 5 units and 3 units. This is the way we used to deal with this. Okay, so that's exactly, we'll deal with this situation also. So we'll take the total work. We will take the total work as 30 units, right? We'll take the total work as 30 units. So we'll say that A can do a work. A can do 5 units of work in a day, and B can do 3 units of work in a day. Okay, so now if we look inside, A can do 5 units of work, B can do 3 units of work. Now if we look inside the group, so this was group A and this was group B. So group A, the LCM of 6 and 10 is 30. And the group A is able to do 5 units per day. Okay, and group B is able to do 3 units per day. Now can we equate it? Yes, obviously we can, because this is the 1 day work of 6 men and 5 women, and this is also the 1 day work of 6 men and 5 women of group A. This is the 1 day work of 3 men and 4 women, and this is also 1 day work of the group B. So right, so this is same now. So now we can equate. Is this clear, students? We can equate it. So we can say that 6m plus 5w is equal to 5, and 3m plus 4w is equal to 3. And we can simply solve these equations. Okay, so I'll multiply the second equation by 2. It will become 6m plus 8w is equal to 6. And then I subtract the first equation from the second one. So we'll directly get 3w is equal to 1. So w will be equal to 1 by 3. Right? Units per day. Okay. If I put this 1 by 3 in any of the equations, so you can calculate the value of m. I'll just put it into the first equation. So 6m plus 5 by 3 is equal to 5. So 6m is equal to 5 minus 5 by 3. So this will be
15 minus 5 by 10 by 3. So this will become and will become 5. This is 3. So 5 by 9. So M would be 5 by 9. Five by 9 units per day. Okay. So we have got both the efficiencies. 5 by 6, no, 5 by 9. Arka. Okay. So we have got the efficiencies of men and women. One man, as we can see, can do 1 by 3 units per day, and one man can do 5 by 9 units per day, and one woman can do 1 by 3 units per day. Okay. Now, if any question like this arrives, so it says that 2 men and 3 women will complete the work in how many days? Okay. So first of all, let me start with the simpler one. So if I ask you 10 men will complete the work in how many days? So because one man is doing 5 by 9 units per day, one man is doing 5 by 9 units per day. So 10 men would be doing 50 by 9 units per day. And if they are doing 50 by 9 units per day, so how long will they take to complete 30 units? So they will take 30 divided by 50 by 9. These many days. Okay. So this will give you your answer. Okay. Now, if we have something like that 10 women will take how many days to complete the work? Or 20 women. 20 women will take how many days to complete the work? So 20 women would be doing 20 by 3 units per day. And how long will it take to reach 30 units? So that would be 30 divided by 20 into 3. That's your answer. Okay. So if I ask you something like this, that 2 men and 3 women will do the same work in how many days? So what do you say? You'll say, you'll first calculate the 1 day work of 2 men and 3 women. So 1 day work of 2 men and 3 women would be 2 into 1 by 3 plus, 2 into 5 by 9 plus 3 into 1 by 3. So that comes as 10 by 9 plus 1. So 19 by 9. Okay, units per day. So if they are working at the rate of 19 by 9 units per day, how long will they take to complete 30 units? 30 divided by 19 into 9. That's your answer. Okay, so this is the way we do the questions of this type. Is this clear, students? Anything that you want to ask? So see, overall flow of this question is that we have been given a group, 6 men and 5 women can do a piece of work in 6 days. 3 men and 4 women can do the same piece of work in 10 days. And so we take the total work as 30 units. We calculate the per day work of group A and group B as 5 units and 3 units. Okay. 5 units and 3 units. This is what we have done. Okay. So we have formed 2 equations that 6 men and 5 women can do 5 units per day, and 3 men and 4 women can do 3 units per day. So we have solved these 2 equations. We have got W equal to 1 by 3 and M equal to 5 by 9. So that tells you that 1 man can do 5 units per day. 1 woman can do 1 by 3 units per day. Okay.
So now we can calculate anything, whatever we want. If we have to calculate, suppose 20 men and 15 women, will be able to do that work in how many days? So first you need to calculate the per day work of this group. This is a new group. You need to calculate the per day work of this group. So per day work of this group would be 20 into 5 by 9 plus 15 into 1 by 3. So this becomes 5 and this becomes 100 by 9. Okay, so 100 by 9 plus 5. That will come as 145 by 9. Okay, so 145 by 9 units per day is the work rate of 20 men and 15 women. How long will it take to complete this 30 units of work? So 30 units of work would be completed in 30 divided by 145 into 9 days. That's your answer. So if I talk about the time, speed, and distance, so there are these three variables. One is a speed, one is a time, other one is the distance, right? And we have say some relations among these three variables, right? And can you tell me the relation? How do these three variables are related to each other? Yes. So this is speed is equal to distance upon time, distance is equal to speed into time, and time is equal to distance upon speed, right? So if I talk about yeah. So first of all, we are talking about the unit of measurement, right? So we have time, we have speed, and we have distance. So time is normally calculated in terms of hours, minutes, or seconds, right? Speed, I just come over this. Distance is normally calculated in kilometer or meter. So taking up the speed, we are having kilometer per hour, or we are having meter per second, right? So there will be a say two standard unit for speed. Sometimes you may find say foot, right? Say some other units are there, even miles sometime is there, right? So if there are some different units, so unit conversion is not given in the examination, right? Examiner will assume that if there is some unit and if the unit conversion is required, so you will always be able to do the unit conversion, right? They will not give the convergence of unit, right? So taking us is some standard thing. Can you tell me 1 kilometer per hour is equal to how many meter per second? No, Venkatesh, not this, not this. Yeah, okay. So 1 kilometer is what? 1,000 meters, right? And 1 hour is a 60 minute and 1 minute is a 60 seconds. So this is 3600 seconds, right? When you simplify, this is coming out to be 5 by 18, right? So 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second, and the reverse is 1 meter per second is nothing but what? 18 by 5 kilometer per hour, right? Okay. So if I talk about the different relations, so this chapter is having only one relation, right?
And what is this one relation among the variables? How do these variables are related to one another? Time, speed, and distance. Yes. So just a one thing, that is a distance upon time, right? But yes, when you're talking about the examination questions, the examination question will not be on this formula, right? They will be based on logic. So we'll be just checking up, right, all these logic. So moving further for this part, now we have a three variable. So one major part is the proportionality, right? And this is what, suppose if speed is constant, right? I take 40 kilometer per hour, right? If you fixed it, you will be moving with a speed of 40 kilometer per hour. So if you are traveling for 1 hour, right? How much? 40 kilometer of distance, right? If you are traveling, suppose 3 hours, then you will be covering how much? 120 kilometer of distance. So if the time is increased, the distance is also increased. So when speed is constant, can I say time is directly proportional to distance? This is the first relation you are getting. Okay? Second, if I say time is constant, right? So suppose you fix 1 hour of time. Right? You fix I'll travel only 1 hour. Now assume that you're traveling with a speed of 30 kilometer per hour, right? And what is the distance you will be covering? 30 kilometer, right? If I say 90 kilometer per hour, what is the distance you are covering? This is 90 kilometer, right? So if time is constant, I can say speed is what? Directly proportional to distance. And this is my second relation. Yeah. Okay. Third one, if distance is constant. Right? So if I say you're traveling for 100 kilometers, right, with a speed of say 25 kilometer per hour, how much time? 4 hours, right? And if I say you're traveling with a speed of 50 kilometer per hour, how much time? This is 2 hours, right? So if speed is increased, time will reduce. Right? So here, if distance is constant, I can say speed is what? Inversely proportional to time, right? So these are the three relation among the three variable. When one is constant, others are working, right? And this proportionality is very, very important if you are solving the questions based on time, speed, and distance. Because questions will not be based on formula, questions will be based on proportionality, right? Okay. So moving further. Yeah. Give me the answer for this. While going at 4 by 5 of the normal speed, right? Suppose you're moving and any something is your normal speed, and now you're moving with the speed of 4 by 5. Just make it correct. Right? 4 by 5 of the normal speed. Person reaches 25 minutes late, right? So from source to destination, person reaches 25 minutes late, right?
what is the normal time taken from source to destination? Yes. Tell me some answer for this. So Hardik, in this distance is not required first thing, right? So there is no need to have the distance. While going at 4/5 of the normal speed, a person reaches 25 minutes late. Right. What is the normal time taken from source to destination? Okay. Okay, Hardik, okay. Share, no, not this. Okay, Hardik, okay. Yes, Tejaswin, yes, yes. I suggest everyone to participate and give some answer, right? So that we can discuss what is a wrong thing or maybe some concept misunderstanding can be discussed. So share, can you unmute yourself? Yes, sir. What's your answer? It was 20. Okay, how is this 20? Actually, I just did 4/5 into 25, and I just subtract, like, divide by 5 to 25, and then multiply to 4. Like 4 into 5, that gives me 20. No. Say this 4/5 is what the speed and 25 is Okay. time. So these two things are different, Okay. right? So this is not there. Okay. So see, we are just starting with the concept, right? So here the answer, right? Getting the answer is not very important. Getting the logic or the concept or the application of the formula and the proportionality, these are very important part, right? So we are starting and solving in a different manner, right? Okay, first one. So we know distance is equal to speed into time. This is a standard formula, right? Okay. So this says while going at a 4/5 of the normal speed, so there must be some normal speed s, right? A person is 25 minutes late. Okay, so person is reaching 25 minutes late. So suppose this is my first equation. Distance is constant. You are going from home to say office or maybe college, right? So distance is same. Some other day, maybe there is some fault in your bike or car, right? So you are going slow. So your speed is now what? 4/5 of s, right? And because of the slow speed, you are reaching late. So you are taking what? 25 minutes extra. This. And this is your second equation, right? Left part is same, the distance. If you're going normal or if you're going slow, distance should be the same. So if left part is same, you can equate the right part. So this is coming out to be what? ST is equal to what? 4/5 of S times of what? T plus 25. S and S cancelled. Just cross multiply, open up the bracket. So this is 5t is equal to 4t plus what? 4 into 25, 100. And simplifying, t is coming out to be 100 minutes. Right? So
My answer is what? That is 100 minutes. So what is the normal time to take from source to destination is 100 minutes. Getting this? Any doubt, any confusion in this logic? Okay. Now, see this. Second part. Distance is equal to what? Is speed into time. The standard formula is standard relation. Now, speed is what? 4 by 5 of s. Because the person is going slow. Now we know this relation, just the above, if distance is constant, right? So here in this example, the distance is constant because you are going from home to office. So if distance is constant, my relation is speed is inversely proportional to time, right? So if the speed is inversely proportional to time, so speed is what? 4 by 5 of s. So can I say time will be what? Inverse proportion 5 by 4 of t. Right? Distance is same. So this is equal to distance. Earlier time was t. Now the new time is 5 by 4 of t. So what I can write? 5 by 4 of t, the new time, minus the old time, the difference should be 25. Right? Yes, getting this relation, difference should be 25. So taking a LCM, simplifying, and I suppose you must be getting t is equal to 100 minutes. Right? Just check. Taking a LCM and simplify this relation, 5 by 4t minus t is equal to 25. So I suppose everyone must be getting what? T is equal to 100 minutes. Yeah. So this is your first method and this is your second method. Right? Yes, any confusion, any doubt, any query, any question here till now? No? Okay. Okay, Jivesh. Okay, good, good. Right. Now, so I suppose question is with you, right? So I'm just scrolling down. Okay, now see. You're moving earlier, there is some normal speed, some normal time, right? Now you're moving again, there is some new speed. So accordingly, there is some new time, right? So we have some values for each, okay? And we have some new values. Okay. We have two variables because distance is constant from home to office, right? So first I'll take speed. Original speed is what? Suppose 1. So the new speed was 4 by 5. Right? So if the 1 speed is the original, new speed is the 4 by 5. So can I say the ratio of speed is what? 5 is to 4. Simple, easy. I'm not going very fast. I'm just explaining the concept so that you can apply when we will be moving in the exercise. Right? Okay, done. Distance is constant. Speed ratio is 5 by 4. So if the distance is constant, speed is inversely proportional to time. So if the ratio of speed is 5 by 4, can I say the ratio of time is inverse proportion 4 is to 5? Easy. There is a 1 unit gap in these two values from 4 to 5. So 1 unit of gap. Now this 1 unit of gap should be equal to what? Yes, should be equal to what?
25 minutes late. Anna, this 1 unit of gap should be equal to what? 25 minutes late. So this is equal to what? 25 minutes. Huh? I want the original time. Done. What is the original ratio of time? 4. And 1 unit is equal to what? 25 minutes. So my time is what? That is 4 into 25, which is nothing but 100. Huh? So this is your third, right? So if you want to take the screenshot, I am just moving up, right? See, this is the question. I just make it a little smaller. So the complete example is in one screen. Any question, any query, any doubt in this example with any one of the method out of the 3 different methods? Okay, so now we are moving further. Huh? Yes, Jivesh, third is the best one because see, when you are talking about solving the questions verbally, right? So you're saying, okay, speed is what 4 by 5. So the ratio should be 5 by 4, right? If the ratio original is 5 by 4, the ratio of time should be 4 by 5. So everything you are doing into the mind. There is no need to write and you can calculate the answer verbally, right, Jivesh? Okay, yeah. So now move further. If a person goes at 20 kilometer per hour, right? If a person goes at 20 kilometer per hour, he reaches 15 minutes late, right? If a person goes at 20 kilometer per hour, reaches 15 minutes late, and if goes at 25 kilometer per hour, right? He reaches he reaches 10 minutes early, right? If a person goes at 20 kilometer per hour, he reaches 15 minutes late, and if he goes at 25 kilometer per hour, reaches 10 minutes early. Fine. Distance distance between source and destination, right? A starting point and final. Okay. Normal time to reach from source to destination, and normal is okay. Tell me the answers or maybe methods or your thinking, whatever like is there. You can type in the chat box, but I suggest that if you are unmuting yourself and sharing your ideas, so it will be better for me to understand as well as to others also, and others can also add up their viewpoint. Yeah.
If a person goes at 20 km per hour, he reaches 15 minutes late, and if goes at 25 km per hour, reaches 10 minutes early. Find distance, normal time, normal speed. Okay, Hardik. Okay, okay. Others waiting for all to participate and to give your answers. Bhaskar, no, not this, not this. Bhaskar, how is this your answer? Sir, I took S1 by S2 equals T2 by T1. So, what is T? Like T minus 20 and T plus 15. Okay, okay. Okay, and Priya, how is this your answer? So it's basically like the equations which we made, like equating both the sides with the distance. Like first of all, if the first person goes in the like with the speed of 20 kilometers, so 20 into t plus 15 by 16, because so it's in minutes, so we will divide by 16 so that it will come in the hours. And then equating with the 25 into t minus 10 by 60 in the similar way. And in that way, we got the time as 11 by 6 with calculations r. Okay. But see, if you are going with this way, you're making an equation, and equation is a little longer one, and solving equation, putting values normally takes a little long time, right? So first I'm solving normal as like Priya and others are taking an equation, and then I'll be taking up this in a shortcut faster, right? So both the methods we will be discussing for this. But I suggest that now onward, when you practice in the book and in the exercises, right? Please take a little long time and try and think the faster method, right? Put a little logical approach. Okay. Okay, so this is a person goes at a 20 kilometer per hour, reaches a 15-minute late, and if goes 25 kilometer per hour, reaches 10 minutes early, right? So in a time speed distance, the visualization is very important. Huh? So suppose this is a some timeline, huh? And this is a normal. Okay, suppose you are reaching office at 10 a.m. Huh? One day you are going slow and reaching office here at what? 10:15 a.m. 15 minutes late. So next day you run fast and you're reaching here. So this is what? 9:50 a.m. Right. So this is the visualization. Huh? Now the standard thing is distance is equal to speed into time. There is no change. The same logic is there. Huh? So what to do? What is the speed? First 20. Huh? Now what is the time? Reaching 15 minutes late, taking extra time. Okay. So this is what? T plus 15. Huh? Now 20. Now as I told you, unit conversion are very, very important in this. Huh? 20 is what? Kilometer per hour. And T is the variable, but 15, if we're adding 15, 15 is what? Minutes. So this expression T plus 15 is typically in minutes. Hai? So divided by 60. Okay. So this is your first distance, right? Second, now you are going with a 25 and now you're reaching 10 minutes early. So T minus 10. And typically again, this is in minutes. So divided by 60. And this distance is same. So what to do? Equal. Huh? Open up, simplify, and everyone quickly tell me what is the T you are getting. I expect that you should solve the equations, right?
Yes, so this is directly coming into the minutes, right? There is a no conversion required because we have already divided by 60. So this is coming out to be 110 minutes. I suppose. Huh? None? Now, so now you're getting a time. So put in a left part or the right part. So you will be getting the distance. Huh? So distance is equal to what? 20. And t is we are getting 110, so 110 plus 15 divided by 60, and this is your distance coming out to be. Huh? So how much is the distance? This is coming out to be 125 by 3 kilometers. Yes. So distance is done, normal time is done. Now both the things you have, distance is there, time is there. So you can calculate the speed. Huh? So what is speed? Speed is nothing but distance divided by time. What is distance? 125 divided by 3. What is time? 110 minutes. Hai. Unit conversion is very important. 110 minutes. So this is what? 110 divided by 60. Simplify. What is the speed you are getting? Yes. What is the speed you are getting? Yes, Akshay, this is 250 divided by 11 what? What is the unit? Kilometer per hour. Right, so unit is very important. Huh? So distance is there, time is there, speed is there, and all three we have calculated for this particular example. Any query, any question? Yeah. Can we move further? Okay. So Pulkit, what to do? See this. You have done this, no? The first part. What is 20? Is speed. Huh? This is what? Is speed. And this complete is what? Time. Speed into time is nothing but distance. And you got the 110 minute, right? So put this here. So 20 into t is what? 110 plus 15 divided by 60. You are getting distance. Right? Okay. Okay, so this is everything in equation, normal standard approach equation, putting the values, solving, right, and then resubmitting, all the standard things are there, right, done. Now come to the shortcut. How to go with the shortcut? I suppose you have the data in the mind, right? Assuming this. So the same thing, there is something old value, there is something new value. Initially moving with a speed of 20, later on moving with a speed of 25. So can I say the ratio of speed is nothing but what? 4 is to 5. 20 is to 25. 4 is to 5. Distance is constant. We are going from home to office. So if the distance is constant and ratio of speed is 4 to 5, so the time is in inverse proportion and the time is 5 is to 4. 1 unit of gap. Right. So now can you tell me how much is this 1 unit equal to? How much this 1 unit equal to? Absolutely, Hardik. Absolutely correct. See this. I told you to just make a picture in the mind, right? So see here, normal time is this.
10 o'clock. One day you're reaching 10:15 and other day you're reaching 9:55, right? So what is the total time gap from 9:50 to 10:50? What is this total time gap? Which is nothing but 25, right? From early to late, right? From early to late, what is the total time gap? 25 minutes. So this 1 unit, right, will be equal to how much? 25 minutes. I want the normal time. So normal time is this. So time is what? 5 into 25. This is nothing but what? 125 minutes. But when I am going at this particular speed at 4, this old speed, I am taking 125 minutes. In this, I am reaching 15 minutes late, right? 15 minutes late. So subtracting the 15 minutes here, my normal time is 110 minutes. Understood? So this is relatively easy. Just a ratio, simple and easy calculation. No equation, no hard calculations, right? Easy calculation. So please repeat. Okay. So I suppose Niyati, you got this logic, no? The speed earlier is 20, later is 25. So ratio of speed is 4:5, right? Ratio of time will be 5:4. I got a 1 unit of gap, so 1 unit of gap should be equal to 25 minutes. Yes, this is done. Yeah. Now, I want the normal time. So take any part, right? So if you're taking this normal, so 5 into 25, 125 minutes. So when you're going with the older speed, right, you are going 15 minutes late, right? You're going 15 minutes late. So subtract this 15 minutes, right? And you can also get an answer from here, right? So time 4 into 25, which is nothing but 100 minutes. Now, when you're going with a new speed, you're reaching 10 minutes early. So 10 minutes early, adding 10 here, right? What is your normal time? 110 minutes, right? So both ways, आप old से भी ले सकते हो, आप new वाले से भी ले सकते हो, है ना? So Shankar, the ratios are taken from here, right? Earlier speed is what? 20, and later on the speed is 25. So ratio is 4:5, right, Shankar? Okay, got this? So I got the time, 110 minutes. Now, come to the what? The other variable, distance. So what is speed or what is time? Time is nothing but what? Distance upon speed. This is the thing. So one day you're reaching early, 10 minutes early. Other day you're reaching late, 15 minutes late with the different speeds. Distance is constant. So see this. Distance and distance. Because you're moving at two different speeds, right? 20 and 25. Now, when you're going with a slow speed, 20, distance upon speed, going with the slow speed, you will take time, longer time. You will reach late, right? And if you're going with a fast speed, 25, distance upon speed, if you're going with a fast speed, you will reach
early. So distance upon speed is giving you time, and this difference of time should be equal to what? 10 minutes early to 10 minutes late, 15 minutes late, right? So total time gap is what? 25 minutes divided by 60, converting to hours, right? Because distance, speed, everything is in kilometer per hour or kilometers, right? So simplifying this one simple equation here, you will get the distance. And what is the distance you are getting here? 125 divided by 3 kilometers. Got this? Yes, please respond. Yes, no, whatever you have in your mind. Sir, please repeat the last term. Okay, so what is time? Time is what? Distance divided by speed. Huh? So you're going 1 day and the other day distance is the same. So there are 2D. Huh? 1 day and 1 day. Now, if you're going with a slow speed, so this means you will take longer time. So distance upon speed, the first one. Huh? This. So this is longer time. आप late जाओगे, late पहुंचोगे, है ना? And if you increase the speed, this one, distance upon speed, है ना? आप जल्दी से पहुंच जाओगे. तो 10 मिनट जल्दी पहुंचने से 15 मिनट लेट तक, है ना? 10 minutes early to 15 minutes late. What is the total time gap? 25, which is this one. Got this? Yes, sir. But how it come 125 by 3 kilometer distance? अरे एलसीएम लो सॉल्व करो, मैंने सॉल्व पड़ी किया. ओके सर, ओके. ये तो इक्वेशन बन गई ना इसकी. ये तो मैंने फिर आंसर लिख दिया. अब इसमें एलसीएम लो, सॉल्व कर लो. बट जो पहले वाला था हमारा, जो हमने पहले किया है, उससे तो इजी हो गया, है ना? जो इतना हम ये कैलकुलेशन सब कर रहे हैं उससे तो इजी हो गया. या है ना? गॉट दिस? सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? Okay, okay. So now going further. Yes. Okay. This is a some distance A and B. Huh? And how much this distance? 140 kilometer. Okay. Now there is this A person going to B with a speed of 20 kilometer per hour. Done? And this person B is going to A with a speed of 15 kilometer per hour. Done? A either and B either, right? Head to head. So can you tell me when will they meet? After what time they will meet? Sir, 140 by 35. Sir, 4 hour maybe. Maybe, not confirmed. Yeah, it's confirmed. It's 4 hour. So what is time? Distance upon a speed. So what is the distance? 140. A and B going head to head. So this is 20 and this is 15. What to do? We are adding
140 divided by 35, this is coming out to be 4 hours. Okay. Now, see this. So this person A moving like this, है ना, यहाँ पे, and this person B moving like this, and they are meeting somewhere here in between, है ना, यहाँ पे ये मिल रहे हैं. अब क्या हुआ कि at this meeting point they are not stopping, है ना, वो यहाँ पे रुके नहीं. तो B ने क्या किया कि B is again moving and reaching the house of A and turn back, है ना, यहाँ कहीं आगे. ठीक है. और जो A है वो भी नहीं रुका. A ने क्या किया, यहाँ से चलता गया और B के घर गया और वो वापस आ गया, है ना, लाइक दिस. तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग हियर एट दिस पॉइंट, है ना, ये फर्स्ट मिले थे जब हेड टू हेड. अब वो फर्स्ट मिले, हेलो किया और दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर्स हाउस. ए बी के घर पहुंच गया, बी ए के घर पहुंच गया. ठीक है. वहां से टर्न किया और वापस से फिर अपने घर के लिए फिर से चल दिए. एंड दे आर मीटिंग हियर सेकेंड टाइम, राइट. दिस इज सेकेंड मीटिंग. तो ये जो टाइम आपने बताया ये है टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग, है ना, टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर 4 hours. अब मेरे को आप बताओ कि टाइम T2 क्या होगा when A and B will meet second time, है ना. So what is the time, after what time they will meet? Second time. How is 28? I mean, like 20 and 15, if we subtract, सब्ट्रैक्ट then क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? Because no, sir, I don't know. Okay. Pulkit, how is this 8 hours? Okay, Pulkit, okay. And yes, no, not this, not this. Tejasvi, how is this 11? Sir, A will take 7 hours, then sir, they will meet after 4 hours. 7 hours. ये कैसे आ रहा है 7? तो मैंने वो कैलकुलेट किया कि A B तक कब पहुंचेगा, तो वो 7 hours लेगा. और फिर सब जब ये स्टार्ट करते हैं तो उनको 4 hours लगता है मीट करने में, तो 11. हाँ सर, वो नहीं होगा क्योंकि उसको अलग टाइम लगेगा. नहीं, दोनों का Sir, अलग it's टाइम 12 hour 20 minutes maybe. नहीं. Priya, how is your 8? So, because like distance would be doubled, that's why. Double, पक्का? So just checking. So see, time speed distance बड़ा ही interesting topic है. I suppose say many of you must be driving two-wheelers, bikes, right? And some of you must be having a racing bikes, right? Super bikes and driving cars with a say fast speed. So speed always thrills, and you're watching the IPL matches and the fastest bowler, right? So all those things. What is the speed of the bowler? So we always calculate, right? What is the time? What is the speed? What is the distance? Every time we are calculating this, right? Okay, now see this. So first meeting, right? Done.
सी द सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है, ए बी के घर गया, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 140। तो ए जब अपने यहां से बी के घर जाएगा तो ए टोटल कितना डिस्टेंस रन करेगा 140। ठीक है, अब बी ए के घर गया पूरा, तो जब बी ए के घर जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस रन करेगा, वो भी कितना करेगा 1। ठीक है, अब दोनों फिर से वापस से मिलके आ रहे हैं, है ना, तो जब दोनों वापस से मिलके आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस फिर जब दोनों मिलेंगे तो कितना रन कर लेंगे 1, है ना। तो व्हेन ए एंड बी आर मीटिंग सेकेंड टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए ने किया 140, बी ने किया 140, है ना, एंड ए और बी दोनों ने मिलके किया 140। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस व्हेन दे आर मीटिंग सेकेंड टाइम। और ए का स्पीड कितना है 20, बी का स्पीड कितना है 15, एडिशन, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 hours. Right? Getting this? सर बट ए तो कम ट्रैवल कर रहा है ना सेकंड में, और बी ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो हाँ ठीक है, बट मिल तो रहे ना, उसका अपना डिस्टेंस कम होगा, बट दोनों ने मिलाकर जो किया वो तो 140 ओके करेंगे सर, ना। ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ, अब देखो सपोज आप कहते हो कि आप जैसे सपोज इस कॉलेज गए और एक दिन आपने जो है ऑफ कर लिया, अब आपने अपने फ्रेंड को बोला कि अरे मेरे को तो ना नोटबुक चाहिए जो टीचर ने काम कराया है, एंड जस्ट मीट मी इन द मैकडोनल्ड। अब वो आपके घर के पास में है, तो आप कम करोगे, फ्रेंड को ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, बट दोनों का मिलाकर डिस्टेंस तो सेम होगा ना 140, यस सर। राइट। सो हार्दिक, व्हाट्स द कंफ्यूजन, कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है इसमें? So why have you added 143 times and not 2 times? Okay, so see, total distance is 140, right? Distance between the two section is 140. अब क्या हो रहा है, ए बी के घर तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 140। बी ए के घर तक जा रहा है, कितना कवर करेगा 140, एंड देन दे इमीडिएटली टर्न बैक एंड मीटिंग समवेयर इन बिटवीन। तो अब वो दोनों मिला के कितना कवर करेंगे 140। तो ए का 140, बी का 140 और दोनों का मिलाकर 140। Okay, sir, got it. Clear. गॉट इट। देखो जब फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं तब हमने टोटल डिस्टेंस कितना लिया यहाँ पे 140, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट ए ने किया कुछ पार्ट बी ने किया, है ना। और वही सेम चीज जब वो दोबारा से टर्न बैक करके आते हैं तो थोड़ा पार्ट ए करेगा थोड़ा बी करेगा, बट टोटल डिस्टेंस कितना करेंगे 140 करेंगे, राइट। Sir, it's 12-hour time. It's from the first meeting or is from the starting? स्टार्टिंग, ये जो टाइम आ रहा है ये स्टार्टिंग से आ रहा है, फर्स्ट मीटिंग के बाद तो 8 आवर्स आएगा, क्योंकि 4 घंटे के बाद उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो जल्दी से अब ये बताओ आप लोग, अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि ये ए और बी ना एक इनफाइनाइट रेस रन कर रहे हैं, ये बीच में रुकते नहीं है, जब भी मिलते हैं हैंडशेक करते हैं और फिर एक दूसरे के अपोजिट एंड पे जाते हैं, फिर से रिटर्न करते हैं, फिर से मीट करते हैं। तो टेल मी के टाइम T3 कितना होगा? पुलकित, माय क्वेश्चन इज कि ए एंड बी जब यहाँ पे सेकेंड टाइम मिले ना तो दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे जस्ट हैंड शेक और फिर वो दोनों जो है भागना शुरू करते हैं, रनिंग करना शुरू करते हैं, अपोजिट एंड्स पे जाते हैं, फिर रिटर्न करके आते हैं, तो फिर से मिलते हैं, थर्ड टाइम दे आर मीटिंग, है ना। तो थर्ड मीटिंग का टाइम कितना होगा? यस वेंकटेश। नो नॉट, नो 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 नियति, नॉट 36। हाउ इज 36? So maybe I thought like periodical, like 4 3s are 12. नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो अभी वो उस पे ही आएंगे, अभी उसको जनरलाइज करेंगे, है ना।
बट ये सर वाला नहीं 24। सर नहीं, न्यूमरेटर में not 280 प्लस करेंगे सर। न्यूमरेटर में कौन से न्यूमरेटर में, T1 या T2? सर 20 hours. T2 में, T2 हाँ में ठीक है, 280 प्लस करेंगे। ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, कितने आवर्स आ जाएंगे? वो 20 कैलकुलेट hours. 20 hours, yes. So the third meeting time is what? This is 20 hours, है ना। अब ये क्या करें, इसमें देखो हमारा मीटिंग, ठीक है, हमारा टाइम एंड हमारा डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस एंड देन वी आर हैविंग सम टाइम। फर्स्ट मीटिंग डिस्टेंस कितना है, 140, ठीक है। सेकेंड मीटिंग डिस्टेंस कितना है, 420, हाँ। थर्ड मीटिंग जरा बताना डिस्टेंस कितना है, 700। 700, है ना। तो क्या होगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, ये ना जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो स्टार्टिंग से करेंगे, बिगनिंग, है ना। फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग के बाद ही स्टार्टिंग से सारे आंसर्स करेंगे, राइट। तो आपका अगर ओरिजिनल डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो सेकेंड मीटिंग कितना होगा, 3D, ठीक है। थर्ड मीटिंग कितना होगा, 5D। अगर मैं और आगे जाता हूँ, 4 है, 5 है, 6 मीटिंग है, तो ये कितना होगा, 7D। ये कितना होगा, 9D। ये कितना होगा, 11D, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर वो हम मान के चलते हैं कि रेस इज इनफाइनाइट एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग, है ना, वो वहां पे रुकते नहीं है, हैंडशेक करते हैं, अपोजिट एंड पे जाते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, फिर हैंडशेक करते हैं, फिर अपोजिट एंड पे जाते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, राइट। तो कंटिन्यूसली अगर वो रन करते चले जा रहे हैं, तो फर्स्ट मीटिंग डी, सेकंड मीटिंग 3D, थर्ड मीटिंग 5D, फोर्थ मीटिंग 7D, फिफ्थ मीटिंग 9D, सिक्स मीटिंग 11D, एंड गोइंग ऑन। व्हाट द डिस्टेंस? Sir, so it's basically the odd series, right? हाँ, है ना। व्हाट दिस? Yes, sir, got it. अब आ जाते हैं टाइम पे। टाइम क्या होगा, तो जैसे फर्स्ट हमारा आता है ये 4 आवर्स, सेकेंड मीटिंग आती है 12 आवर्स, थर्ड मीटिंग आती है 20 आवर्स। तो जरा एक बार बताना कि फोर्थ मीटिंग कितने पे आएगी, टाइम T4 कितना होना चाहिए, ऐसे ही बताओ जरा, T4 कितना होना चाहिए। 28। 28, है ना, दिस इज 28 आवर्स। अब इसमें क्या करेंगे, है ना, इसमें देखो, ये तो 4 हमारा हो ही गया, ठीक है। इसमें भी कुछ 4 हो ही रहा है, बिकॉज फर्स्ट मीटिंग वाला 4 तो आएगा, इसमें भी 4 कुछ आएगा ही आएगा, है ना। तो ये जो हम टाइम ना सब्सिक्वेंट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम इनिशियल टाइम बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वाला टाइम, डन। अब ये पैटर्न क्या चलेगा इसमें आपका, 4 प्लस दिस इज 4 into 2, है ना। ये क्या होगा, दिस इज 4 + 4 into 0, ठीक है। ये क्या चलेगा, दिस इज 4 into कितना, 4। ये क्या चलेगा, दिस इज 4 into 6, है ना। तो अब अगर मेरे को इसमें नेक्स्ट वाला टाइम निकालना है, एज्यूमिंग दैट के इफ आई वांट के T5, है ना, तो T5 कितना होना चाहिए, दिस इज 4 + 36. 4 into 8, है ना, एंड दिस इज 36। अब इसको आप चेक करके देख लो, जो हमने फिफ्थ टाइम निकाला टाइम T5 के लिए मेरा ये आता है ना। तो अगर हम लेते हैं कि 9 into 140 डिवाइडेड बाय कितना, 35, कितना आ रहा है, 36. 36। ये आ गया टाइम,
Sir, we can say that distance is odd and time is even, right? हाँ, है ना? What this? ये शशांक, यस यस यस। तो इसमें देखो कि जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, फॉर्मूला तो पता नहीं कहीं पीछे ही रह गया है ना, वो तो हमने बस अब यूज करना ही बंद कर दिया है ना, उसको तो अब लेकर ही नहीं आए। एवरीथिंग इज नाउ ऑन प्रोपोर्शनलिटी एंड लॉजिक, है ना। तो इसमें ना आपको विजुलाइज करना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, रनर्स कहाँ भाग रहे हैं, बाइक कैसे चल रही है, ट्रेन किधर जा रही है ना, कैसे मूवमेंट हो रहा है, कब वो मीट कर रहे हैं, कब एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। तो जितना आप उसको पिक्चराइजेशन कर लोगे उतना ही आंसर निकालना इजी होगा, राइट? गेटिंग दिस? सो व्हाट आई सजेस्ट कि जो चैप्टर है बुक में, जो थ्योरी है ना, उसको एक बार रीड करो, सॉल्व एग्जांपल्स करो एंड ट्राई सॉल्विंग सम इनिशियल 10-15 क्वेश्चंस, है ना। और इससे हम आगे धीरे धीरे मूव करेंगे और जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चंस की उसको इंक्रीज करेंगे। बट जो बेसिक चीजें हैं ना, क्या क्या, यूनिट्स का कन्वर्जन, प्रोपोर्शनलिटी कौन से वाला, जो हमने किया था कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, है ना, वो। एंड प्लस थर्ड थिंग इज कि जो मूवमेंट होता है ना, पर्सन्स का, ट्रेन, बाइक, वट जो भी ऑब्जेक्ट है, वो कैसे किधर मूव कर रहा है, उसको हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, एंड देन वी विल बी जस्ट इजी टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करें हम। काफी बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मुझे 100 को 2:3 में डिवाइड करना है, एक नंबर है 100, उसको मुझे अगर 2:3 में डिवाइड करना है, तो दोनों नंबर्स क्या क्या बनेंगे, ठीक है। 100 को 2:3 में डिवाइड करना है तो दोनों नंबर्स क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो दिस शुड बी इजी। बताओ क्या क्या बनेंगे दोनों नंबर्स। राइट, राघव करेक्ट, योगेश करेक्ट, अदिति करेक्ट, अमन करेक्ट। अच्छा, देयर इज अ हाँ, तो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, ठीक है। दिस वाज एन इजी वन, ठीक है। दिस हैज टू बी 40 and 60। मुझे अगर 100 चीजों को 100 एक नंबर है 100, उसको अगर मुझे 2:3 में डिवाइड करना है, मतलब मुझे दो ऐसे पार्ट्स बनाने हैं जिनका की रेशियो 2:3 हो, तो वो नंबर्स होंगे 40 और 60, करेक्ट। ओके, एंड तो ये तो इजी हो गया, ठीक है। व्हाट इफ आई से कि मुझे 100 को 3:4 में डिवाइड करना है, तो अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो कि क्या क्या बनेंगे। एंड मोर ओवर, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि क्या क्या बनेंगे, मुझे ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि कैसे करेंगे। 100 को 3:4 में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। एग्जैक्ट मत कैलकुलेट करो, अप्रोक्सीमेट करो, एकदम अप्रोक्सीमेट करो। मुझे आंसर अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है। फोकसिंग ऑन द मेथड। ओके,
तो 100 को 3:4 में डिवाइड करना है तो पार्ट्स बनते हैं अराउंड 42 एंड 57, ठीक है। बट ये अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना, दैट्स द इशू, कि ये अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना। तो याद है कि हम जब आखिरी बार तुमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा शायद बचपन में अपने स्कूल्स में, तो वी यूज्ड टू टेक ये जो दोनों पार्ट्स हैं 3 और 4, इन दोनों को मैं 3x और 4x लेता था, ठीक है। एवरीवन शुड बी इंटरेक्टिव इन माय क्लास, ठीक है, सबके आंसर्स मुझे दिखाई देते रहने चाहिए और डाउट्स दिखाई देते रहने चाहिए। अगर जरा सी भी कोई भी इशू है कुछ भी समझने में तो तुरंत बताना, ठीक है। वेट मत करना कि बाद में समझ आएगा, नहीं। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने एक स्टेटमेंट बोला और तुम्हें नहीं समझ में आया तुरंत के तुरंत बताओ, ठीक है, वेट करना ही नहीं। ओके 100 को डिवाइड करना है 3:4 में, तो दोनों पार्ट्स को हम 3x और 4x लेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस। Everyone who has joined late, ratio proportion is going on and this is the first concept, so you have missed nothing. किसी ने कुछ भी मिस नहीं किया है। फिर देखो 100 को अगर मुझे 3:4 में डिवाइड करना होता है तो दोनों पार्ट्स को मैं 3x और 4x लेता हूं और उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, है ना, क्योंकि भाई जो दो मेरे दोनों पार्ट्स बने हैं उन दोनों का सम तो 100 ही चाहिए ना। तो 3x plus 4x should be equal to 100, correct? Okay, so 3x plus 4x is equal to 100. यहां से x की वैल्यू आती है 100/7, है ना। तो 100/7 तो x की वैल्यू आ गई। अब पहला पार्ट मैंने लिया था 3x और दूसरा पार्ट लिया था 4x, राइट। तो जो दोनों पार्ट्स बनेंगे मेरे वो हो जाएंगे 3 into 100/7 and 4 into 100/7, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे ही करना होता है। अब अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं, अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं तो मुझे अगर एक नंबर गिवन है s और उसे मुझे डिवाइड करना है a:b के रेशियो में, if there's anyone who's not comfortable with Hindi, let me know, ठीक है। I have a number s, इसको डिवाइड करना मुझे a:b के रेशियो में, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स बनाने के लिए मुझे हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, x ax और bx करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट इसको देख के जनरलाइजेशन कर सकता हूं। इसको देख के जनरलाइज करो तो पहला पार्ट हो जाएगा as डिवाइडेड बाय a प्लस b, ठीक है। इसको देख के जनरलाइजेशन समझ आ रहा है। एंड दूसरा पार्ट हो जाएगा bs डिवाइडेड बाय a प्लस b। Is there anyone who's not able to understand anything in this? Everything should be crystal clear. आगे बढ़ना ही नहीं है बिना समझे, ठीक है। जब तक ना समझ में आए तब तक आगे बढ़ना। यस यश, देखो ये वाला, ये मेथड तुमने लेट ज्वाइन किया। मैं जल्दी से रिपीट करता हूं। 100 को अगर मुझे 3:4 में डिवाइड करना है, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स को मैं 3x और 4x ले लेता था, है ना, और उन दोनों को इक्वल रख देते थे हम 100 के, ठीक है। एक पार्ट हो गया 3x, एक पार्ट हो गया 4x और उसको इक्वल रख देते थे 100 के। यहां से x की वैल्यू आएगी 100/7 और 100/7 x की वैल्यू आ गई तो पहला पार्ट बन जाता है 3 into 100/7 एंड दूसरा पार्ट बन जाता है 4 into 100/7, ठीक है। आई होप बोथ द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तो वैसे ही हमने अगर s को a:b में डिवाइड करना है तो पहला पार्ट बनेगा as डिवाइडेड बाय a प्लस b,
और दूसरा पार्ट बनेगा BS डिवाइड बाय A प्लस B। ठीक है, दैट्स द वे वी डू दिस। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगर मैं एक सम है S, उसको अगर मुझे 3 रेशियो में डिवाइड करना है, A's to B's to C, तो दैट वुड बी सिंपली AS डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C, BS डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C एंड CS डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C। ठीक है, बस ये हो डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज डन। विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर A इज टू B की वैल्यू 2:3 गिवन है, ठीक है, और B इज टू C की वैल्यू सपोज पहले सिंपल लेते हैं, 3:4 गिवन है और मुझे A इज टू B इज टू C कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं सिंपली, है ना? मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं, इसको मैं सिंपली 2:3:4 कह सकता हूं। ये सही है ना? ठीक है, हाँ। अब प्रॉब्लम तब आती है जब ये वैल्यू ये वैल्यू 3:4 ना होके कुछ 4:5 है, तो A is to B और B is to C गिवन है 2:3 एंड 4:5। अब अगर मुझे A is to B is to C कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब पिछले वाले में तो ये 3 लिखा हुआ था तो बड़े आराम से हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? LCM M क्या होता है राघव? ठीक है, तो अब क्योंकि ये सेम नहीं है, बी वाला पार्ट दोनों जगह सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाना पड़ेगा, है ना? और सेम कैसे बनाएंगे? इसको काट के 3 लिख देंगे, ऐसे बनाएंगे सेम? नहीं ना, तरीका होना चाहिए कुछ। हाँ, तरीका ये है कि मैं 12 से कंपेयर करूंगा। 12 है LCM 3 और 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया। अब मुझे सारी चीजें ठीक रखनी है। हाँ हाँ राइट योगेश, मुझे ना सारी चीजें, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं मुझे सब करेक्ट है ना? और मुझे सारी चीजें सही रखनी है। इसका मतलब कि मुझे ये रेशियो भी मेंटेन करना है। ये जो रेशियो है ना मेरा 2:3 का, मुझे इसको भी चेंज नहीं होने देना है। तो अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा रेशियो 2:3 जो था वो 8:12 बन जाएगा। ठीक है, जो रेशियो 2:3 था वो 8:12 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मैं 5 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और मेरा ये रेशियो भी 12:15 बन जाएगा। ठीक है, अभी भी मैंने ये मेंटेन करके रखा है, 2:3 और 4:5 मैंने मेंटेन करके रखा है, बस उसकी वैल्यू कुछ बढ़ा दी है, ज्यादा चेंज नहीं किया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ क्योंकि बी पार्ट सेम हो चुका है और ये बन जाएगा 8:12:15। डन। कोई ऐसा जिसको कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकता है। ओके, अगर ये हो गया है तो अगला क्वेश्चन कीजिए, A to B। अच्छा, मैं इसको हटा के लिख देता हूँ दूसरा। ये पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना?
दूसरा क्वेश्चन, A is to B is to, sorry, A is to B given है 1:2, B is to C given है 2:3, नहीं 2:3 नहीं 3:4, and C is to D given है 5:6. ठीक है, सबको कंबाइन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, A is to B is to C is to D. Everyone do this. Yes, Raghav, correct. यश क्या है ये? 36 क्या है? मैं पूछ रहा हूँ A is to B is to C is to D की वैल्यू, 4 वैल्यूज देनी होंगी, ठीक है? हाँ, आदिति करेक्ट, अमन करेक्ट, हितेश करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, तरिशी करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, okay, most of you have done it correctly. Shubhashri correct, Yogesh correct, प्रशांत, ये 6 रेशो कहां से आ गए? 4 ही तो चाहिए। कोई नहीं करो, दोबारा कर लो, उसमें क्या है। अच्छा, कौन कौन नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को? कौन कौन नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को? ओके, तो जो नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले तो सबको एक साथ कंबाइन करने की कोशिश मत करो, है ना। पहले दो को एक साथ दो को कंबाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम है 6, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3:6,
और मैं इसको लिख सकता हूँ 6:8, ठीक है। फिर मैं कंबाइन कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A/B/C की वैल्यू 3:6:8 है ना, और C/D की वैल्यू 5:6 है ना। तो 8 और 5 का एलसीएम 40। अब देखो हमारे पास A/B/C आ गया है, हमारे पास C/D आ गया है। अब मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 40 दोनों साइड, और ये हो जाएगा अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे को ही मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 15:30:40 एंड इधर मैंने अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे सबको ही 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये बन जाएगा 40:48, और ये कंबाइन होके हो जाएगा 15:30:40:48। दैट्स योर आंसर। डन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। टू समथिंग लाइक, अगर मैं कहता हूं कि 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 6C है, और अब अगर मुझे A/B/C की वैल्यू चाहिए तो क्या हो? अगर मुझे A/B/C का रेशियो चाहिए तो बताओ क्या होगा? अच्छा, क्या इसका आंसर 3:4:6 होगा? हाँ, नहीं होगा, ठीक है। नहीं हितेश, ये कभी नहीं हो सकता। समझो, A का 3 गुना B के 4 गुने के मुकाबले है ना। A का 3 गुना B के 4 गुने के मुकाबले है, इक्वल है, ठीक है। और A का 3 गुना, अब जैसे मैं ये पहला और आखिरी एग्जांपल, पहला और आखिरी पार्ट देखता हूं, तो A का 3 गुना C के 6 गुने के बराबर है। तो क्या A/C की वैल्यू 3:6 यानी कि 1:2 होगी? नहीं ना। तो पहले तो ये समझो कि ये 3:4:6 कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है कि क्या वैल्यू होगी, है ना। अमन करेक्ट, राघव करेक्ट। जिसने भी आंसर दिए हैं मेरे को सब करेक्ट ही हैं, ठीक है। ओके, अब करेंगे कैसे स्टूडेंट्स? देखो, करेंगे ऐसे, मतलब काफी मेथड्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। पहला मेथड है कि 3A = 4B, इसको अलग करके लिख लो। 3A = 4B, तो यहां से A/B की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। और फिर इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके कर रहे हैं। तो 4B = 6C है, तो B/C की वैल्यू आ जाएगी 6/4, ठीक है। हाँ, तो A/B की वैल्यू 4/3 है, B/C की वैल्यू 6/4 यानी कि 3/2 है। अब इसको कंबाइन कर सकते हो, जो पिछला मेथड था A/B 4:3 एंड B/C 3:2, ये तो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4:3:2। हाँ हाँ, तो इजी है।
ओके 12 इज कॉमन, सो 432 आएगा। ओके अच्छा, दूसरा मेथड है कि आप 3, 4 और 6 का एलसीएम लो। ठीक है, 3, 4 और 6 का एलसीएम लो और आप इन तीनों नंबर्स को एलसीएम के इक्वल रख दो। 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू 12 रख दो। ठीक है, तो यहां से आपकी a की वैल्यू आएगी, देखो अब 3a इक्वल टू 12 है ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, 4b इक्वल टू 12 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, और 6c इज इक्वल टू 12 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ बेटर मेथड। ठीक है, तो एलसीएम लो और इन तीनों चीजों को एलसीएम के इक्वल रख दो। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो इनको मैं किसी भी नंबर के इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है तो रेशियो तो आ ही जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। डन? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब थोड़ी ज्यादा लॉजिकल चीजें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, आप बताना मुझे, एबीसी 3 नंबर्स हैं जो हैं 4, 5, 8 के रेशियो में। ठीक है, 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 4:5:8। ठीक है, मुझे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि a+1, b+1 और c+1 का रेशियो बताओ, तो क्या बोलोगे? एबीसी का रेशियो है 4:5:8। मैं तुमसे पूछता हूं कि a+1, b+1, c+1 का रेशियो बताओ, तो क्या बोलोगे? अच्छा, तुम्हारे ऑप्शंस हैं 5:6:9 पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 41 मैं दूसरा ऑप्शन नहीं बना पा रहा। हाँ, अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं ये देता हूं कि ये सेम रहेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, पांचवा ऑप्शन है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो। तो कितने लोग कह रहे हैं पहला ऑप्शन 5:6:9? कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, सारे लोग अपने एक एक ऑप्शन चूज करके भेज दो मुझे। ठीक है, जो भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इट डजंट मैटर कि वो सही ही होना चाहिए, अगर सही नहीं हुआ तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जो भी है आंसर भेज दो मुझे, है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले तो इसको ना, कभी भी अगर 3 नंबर पे कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है ना, तो उसको सबसे पहले 2 नंबर पे लेके आओ। ठीक है, उसको 2 नंबर पे लाके समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे अगर a/b का रेशियो 4/5 गिवन है, और मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि a+1/b+1 का रेशियो बताओ,
तो कैसे करोगे इसको? ठीक है, लॉजिकली आंसर देना, जो जिसको भी नहीं आया है वो आंसर देना सही। कोशिश करो कि कुछ ना कुछ आंसर दे पाओ। मैं आंसर चेक नहीं कर पा रहा हूँ। वी कैन यूज एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4x और 5x ले लेता हूँ यश, तो ये हो जाएगा 4x + 1 बाय 5x + 1। अब इसका क्या करें? क्या करें इसका? इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते, है ना? ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। We cannot determine the exact value of x। हाँ, obviously हम a+1 और b+1 का रेशियो नहीं बता सकते यहाँ से, है ना? क्योंकि 4x + 1 बाय 5x + 1 सॉल्वेबल नहीं है। x के टर्म्स में कुछ नहीं बताया जाता है। अगर आंसर x के टर्म्स में ही आ रहा है तो इसका मतलब आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। Okay, so the answer of this question is cannot be determined. This is the final answer, ठीक है। आप नहीं बता सकते। 2 नंबर पे करके देखो, ठीक है, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम a+1 बाय b+1 ये वैल्यू तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। डन? All clear? Why first option is not the answer? It is because Anushka कि जब आपको एक सेकंड, हाँ, जब आपको a/b की वैल्यू 4/5 दी है और आपसे a+1 बाय b+1 पूछा है, ठीक है। इन 3 नंबर्स को भूल जाओ, 2 नंबर्स पे ध्यान दो। अगर a+1 बाय b+1 पूछा गया है तो आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना 4/5, आपको 4x 5x के फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से आप इनको अलग नहीं कर सकते, इसको आप a/b + 1/1 नहीं लिख सकते, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिख सकते होते तो a/b की डायरेक्ट वैल्यू यहां से पुट कर देते, है ना, x हटा के, लेकिन अभी नहीं कर सकते ना, तो नहीं बता सकते। a+1 बाय b+1 नहीं बता सकते। अगर लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली ये एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर a b c 4 5 8 के रेशियो में है तो ये इनके रेशियो हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। इनकी एक्चुअल वैल्यू 4 5 8 हो सकती है। इसके अलावा 8 10 16 हो सकती है, 40 50 40 50 और 80 हो सकती है ना, एंड सो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो 5 6 9 आएगा, है ना। लेकिन मैं अगर इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 5 6 9 नहीं आएगा, तो फिर 9 11 17 हो जाएगा, और ये दोनों सेम नहीं है, तो हर नई वैल्यू पे नया रेशियो आएगा। इसका मतलब डेफिनेटली ए बी सी का रेशियो हम नहीं बता सकते। इज दिस नाउ क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला a+1 b+1 c+1 हम नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ ABC का रेशियो गिवन है और मुझे कैलकुलेट करना है ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B एंड ट्वाइस ऑफ C का रेशियो, तो क्या होगा?
Yes, Aditi correct, Raghav correct. Right. शशांक इसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में लेके आओ. We have a person, Dipanshu here. Hi Dipanshu, I'm Dipanshu. सप्तऋषि इसको इसमें वैल्यू पुट करो और उसको फिर मिनिमाइज्ड फॉर्म में लेके भी आओ. अश्मित इसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में लेके आओ. देखो अगर आप इसको 8:10:16 बोल रहे हो तो इसको फिर इसमें से 2 कट जाएगा ना, वापस से 4:5:8 आ जाएगा. ठीक है, छोटे नंबर्स पे समझो कि अगर a/b की वैल्यू 4/5 दी है और मैं तुमसे पूछता हूं 2a/2b की वैल्यू बताओ. मैथमेटिकली 2a/2b की वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे? स्टूडेंट्स, तो सप्तऋषि ये क्या है? 8/10 क्या है? हाँ, सिंपल ये 2 से 2 कैंसल हो सकता है ना. यहाँ तो हाँ चिपके हुए नहीं है ना. ये 2+a/2+b होता तो ये अलग अलग नहीं किए जा सकते थे. यहाँ पे हम 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते, राइट. लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये तो a/b के बराबर ही हो गया. ठीक है, क्या समझे इससे कि द रेशियो ऑफ 2a, 2b एंड 2c विल रिमेन सेम. ठीक है, एंड डिटर्मिनेबल. ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा. ठीक है, अगला. व्हाट इफ आई आस्क यू द रेशियो ऑफ 2a, 3b एंड 4c? इन तीनों का रेशियो बताना, क्या आएगा? दिपांशु करेक्ट, अदिति करेक्ट, राघव करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, कृतिका जस्ट अ बिट रॉन्ग, शशांक करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, नहीं शशांक जस्ट अ बिट रॉन्ग, सुभाश्री करेक्ट, योगेश करेक्ट, अश्मित करेक्ट. हाँ शशांक आप करेक्ट है. ठीक है, अगेन 2 नंबर पे समझो कि अगर a/b की वैल्यू 4/5 गिवन है और मैं तुमसे 2a/3b कैलकुलेट करने को कहता हूं. अगर मैं तुमसे 2a/3b की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहता हूं, तो अगर मैं इसको 2/3 अलग और a/b अलग लिख दूं तो क्या ये गलत हो जाएगा? क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं ना, ये तो सही होगा, है ना. सही है ना. तो अब मैं a/b की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकता हूं यहां से 4/5, तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना.
तो ये बन गया 2/3 इंटू 4/5, है ना, 8/15 आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इससे ये समझ आया कि मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। ठीक है। तो नया रेशियो इस केस में हम बता सकते हैं बिल्कुल, इट इज डिटर्मिनेबल। ठीक है, बट इट विल चेंज। ठीक है, ये बदल जाएगा लेकिन डिटर्मिनेबल रहेगा। ठीक है, बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से 3 चीजें सीखी स्टूडेंट्स। हमने यहां से 3 चीजें सीखी कि अगर मुझे 3 नंबर्स का रेशियो गिवन है, या 4 नंबर्स का गिवन है, या जो भी है 5 नंबर्स का गिवन है, एंड सो। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स का ये रेशियो गिवन है, अगर मुझे उन सब में कुछ कांस्टेंट ऐड करना है या माइनस करना है, तो नया रेशियो मैं नहीं बता सकता। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, माइनस के केस में भी यही रहेगा। अगर मैं सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो रेशियो डिटर्मिनेबल भी होगा और सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा रेशियो में। और अगर मैं इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रेशियो डिटर्मिनेबल रहेगा लेकिन चेंज हो जाएगा। तो नया रेशियो के लिए आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 8, 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 32। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर टिल दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? ये सब याद रखना, रेशियो में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, किसी को जरा सी भी डाउट हो रही हो अभी तक तो पूछ सकता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ओके, उसके बाद आता है, तो रेशियो इज डन। उसके बाद आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ABCD 4 नंबर्स हैं जो कि प्रोपोर्शन में हैं, 4 नंबर्स हैं जो कि प्रोपोर्शन में हैं, तो इसका मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। ठीक है, ये जो है वो रेशियो का साइन है और ये जो है वो प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, 2 बार रेशियो लिख देते हैं, 2 बार रेशियो का साइन बना देते हैं तो प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, और इसका सिंपल सा मतलब है कि A/B इज इक्वल टू C/D। A/B इज इक्वल टू C/D। डन। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन है कि if A, B, C are in proportion, ठीक है, अगर ABC 3 नंबर्स ही प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या करते हैं हम कि A is to B is proportional to B is to C कर देते हैं। A is to B proportional to B is to C कर देते हैं। तो यहां पे ना B कॉमन कर देते हैं। ठीक है, हाँ राइट अदिति, करेक्ट। ABC are in proportion and ABC are in GP सेम हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी GP आया नहीं है, आई डोंट नो प्रोग्रेशन तुमने पढ़ाया नहीं, बट GP में यही कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे तब कनेक्ट कराएंगे, रिलेट कराएंगे। ठीक है, फिलहाल समझो कि अगर, हाँ, अगर A is to B is proportional to B is to C है, राजदीप ये क्या है? 8 is to 15 is to 32, ये जो हमने 15 मिनट पहले क्वेश्चन किया था उसका आंसर है।
मैसेज लेट आया है, BSNL से भेजा है। ओके सर, वी विल नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन टू द रेशियो, अभी करते हैं, सारे करते हैं, ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल करेंगे क्वेश्चंस भी। तो A to B इज प्रोपोर्शनल टू B to C होता है, तो A by B इज इक्वल टू B by C हो जाता है, ठीक है, B कॉमन हो जाता है, बस ये है। इसके बाद ना एक छोटा सा टर्म और होता है, मतलब दो टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। कभी बचपन में ऐसे कुछ टर्म्स पढ़े थे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये वो जूडो कराटे वाले नहीं है, वो टाइक्वांडो होता है, ये मैथ्स वाले हैं, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। हाँ हाँ, राघव करेक्ट, अदिति करेक्ट। इसका मतलब होता है, बस एक रटने वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ भी लॉजिकल ज्यादा नहीं है, कि A बाय B अगर C बाय D के इक्वल है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है, या फिर ना इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अप्लाइंग C एंड D, अप्लाइंग C एंड D ऐसे करके लिखते हैं। तो इससे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि A प्लस B डिवाइडेड बाय A माइनस B विल बी इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाय C माइनस D, ठीक है। A plus B divided by A minus B will be equal to C plus D divided by C minus D। अगर A by B is equal to C by D है तो, ठीक है। Average is very simple for anyone, and say most of you are working professionals in different capacities, right? You must be calculating the average salaries, average number of hours, average weight, average speed, right? You are going to college or your office, so you must be calculating what is my, say, average consumption of fuel, right? So these are the various uses. Average is very common, and in this, what we do, we just add up all the readings, the entries, and then divide by the counting of the readings or the entries, right? This is very simple. Okay, so if I say in a class there are some boys, right, and there are some girls. Say boys are 40, right, and girls are 30, right, and the average marks for the boys are 75, and for the girls, say this is 80. Then I want to calculate the average marks for the class. How can I calculate? What is the average marks of the class? Yes. Answer is not important. Just tell me like how can I go further and how can I calculate the average marks of the class? Yes. Oh, this is very simple. No, nobody wants to discuss today. What happened? So Krishna, I said, okay, Anadi, so number of boys, yes, right. So this is if I want to calculate for the average marks for the class, right? So this is what? Number of boys, 40, and multiplied with the marks for the boys. So these are the total marks for the boys, right? Yes, Nandini, yes, Nadi. And then this is 30 multiplied with 80, the marks for the girls, and then we are adding them. So this is the total for the class.
and divided by this by number of boys and plus number of girls, right? This is the very simple. So this is nothing but what we are saying. Can I say this is what? Weighted average, right? Because for the 40 girls, right, or say for the say 75 marks of boys, what is the weight? 40 boys, right? So this is representing for the 40 boys. Similarly, 80 marks for the girl, but this is the representation of for what? 30 girls. So this is what? Weighted average, right? So I can write this as number of boys multiplied with average of the boys plus number of girls multiplied with the average of the girls divided by the number of boys plus number of girls. Very simple expression, right? So I just reframe and just restructure this, right? So can I say, taking this simple as the average, so cross multiply average and 1 plus average and 2 is equal to what? N1 S1 plus N2 S2. And shift the terms. Average N1 minus N1 S1 is equal to N2 S2 minus average N2. Right? Just a shifting of the terms. Right. Take a comma. N1. So this is average minus S1 is equal to N2 S2 minus average. Right? Now this is N1 upon N2 is equal to what? S2 minus average divided by what? Average minus S1. Right. So there is nothing new. I have just rearranged, just restructured the formula, which was this. Right. So in the earlier form, we are saying this is for weighted average. Right. So you have some number of boys, that is a some quantity, and there is a some average, and you are calculating the group average. So we are calling this as a weighted average. That is, you're finding the average of the entire group, right? But suppose if I give you the average of the entire group and I ask you, okay, tell me how many boys are there in the class and how many girls are there in the class. So this is what? This is nothing but alligation. Right? So there is nothing new. This is just the rearrangement, restructuring of the weighted average formula. Whatever the variable we have, the same variable are there in this, but they are just rearranged. So in this, what we are calculating, N1 number of boys, N2 number of girls. So this is giving me the ratio, right? Ratio of boys and girls. The earlier one was giving me the average of the total group, the boys in the group. But now we are getting the ratios, number of the quantities, the ingredient, right? So in our alligation, whatever we are mixing, we are calculating the ratio or the quantity, right? So this is what my alligation, right? Now coming to this part, before proceeding further, tell me one thing. There are two terms. One is mixture, right? And the other one is solution, right? So can you give me some difference between these two terms, mixture and solution? What is the difference between mixture and solution? You can speak out. You can unmute yourself and you can speak out so that others can also listen and they can add some points.
Okay, Krishna is saying solution will dissolve. Okay. Mhm. Mixture is still you can separate. Okay. Mhm. So hello Krishna, can you give me some example? Can you speak out? Sir, let's say in the mixture, in the sense, two fruits mixing in and selling it as a single basket is a mixture, and a solution it's like milk and water, and or water and like sodas or something like this. Which means solution you can't split back again, but in the mixture you can split back. I'm just giving out my opinion. Maybe I'm wrong. Okay, okay. And hello Tanushri, can you define what is mixture and what is solution? Yes, sir. Yes. Sir, a mixture is actually the mixing of homogeneous components, whereas solution is a mixture of two homogeneous components, and in a mixture the components are heterogeneous. So in a mixture, components can't be separated, but in solution it can be. Okay, okay. So basically, as we are not studying the chemistry, so we are not going into the deep of these terms like what is heterogeneous, what is homogeneous, etc. Right. We are just going in a simple expression, simple definition. When you are mixing, right, two, three more items, ingredients, and after the mixing, if you are not able to separate them, then this is called as what? Solution, right? For example, water and milk. After mixing water and milk, you cannot separate, right? Then water and cool drink, you cannot separate, right? But if after mixing you are able to separate them, then this is called as what? Mixture. So milk and petrol, water and petrol, rice and wheat, apples and mangoes. So when you're mixing them, you can separate them. So these are the mixture. We say mixture of boys and girls in a class, in a college, right? We are not saying solution of boys and girls, right? We are saying mixture of gases in the atmosphere, right? Because we can separate the gases. We are not saying solution of gases in the atmosphere. So in solution, you cannot separate. In mixture, we can separate, right? So alligation is primarily applicable for mixture. That is where you are able to separate the ingredients, right? But in the questions, you will find these two terms interchangeably, right? The examiners are not making any difference, but primarily the purpose of the allegation is to separate the ingredient, right? Whatever are mixed. Okay. So moving further, tell me, suppose there is a sugar, right? Sugar one, and this is price at rupees 10 per kg. Okay. There is a sugar two, and this is suppose rupees 15 per kg. Done. Separate. I want to mix them, and I want the mixture should be rupees 12 per kg. So can you tell me how much I should take the first one and how much I should take the second one? What can be the possible ratio for taking up a mixture price is 12 rupees per kg? Yes. Okay, Muskan. Okay.
1.5 and 1. So Krishna, how is this 1.5 and 1? Sir, it's so the second sugar is at 15. So yes, too, I took it as 15, and the average value, both it should come towards 12. So 15 minus 12 would be 3 on top, and then in the same formula, average minus S1 would be 12 minus 10, so it would be 2. So 3 by 2, so 1.5 is to 1 or 3 is to 2. Okay. In ratio. Okay. So basically, as we have discussed in the ratio session, ratios are the simplest number, right? So if there is just some common part, decimal, normally we are removing them. Ratios we do not represent in a decimal, right? We represent them in a proper natural number, the complete number, right? Okay, so I want the quantity for the sugar 1, sugar 2. So can I say this is what? Quantity of first to the quantity of second. Then using this. So earlier, what there? This is N1, 2, and 2, number of boys and number of girls. Now I am saying the quantity of first sugar, quantity of second sugar. Then S2, that is the average of the second. Right? So this is what? 15. Then the group average is what? 12 divided by the group average 12 minus the average of the first part. And this is coming out to be 3 by 2. Yeah? But when we're using the formula, so sometimes we make error, and under again the exam pressure, what to take first, what not to take first, right? And shifting the variables. So sometimes we are getting answer in negative, and we feel that hey, yes, so this is a possible, right? But see, ratios cannot be negative, right? So what we are doing, rather than using a formula, what we do, we are using a little diagrammatic representation. And this is sugar 1 and this is sugar 2, right? So whatever the variable you have, just write them little apart, right? Making us some difference. So this is how much? 10. This is how much? 15. Okay, done, simple. Now average is 12, so write the average in the middle, little low, right? Now, what to do? From the bigger number, subtract this average. Right? And from this average, subtract the smaller number. Okay. So 15 minus 12 is 3, and 12 minus 10 is 2. Right. So sugar 1 will be taken as a 3 part, and sugar 2 will be taken as a 2 part. So ratio is coming out to be 3 is to 2. Right? So here we are not concentrating what is the first, what is the second, what should I write, what should I not write, right? So this is a little simple approach, right? Getting this? Any question, any query till now? Okay. Now, so there are two different type of sugar, sugar 1, sugar 2, and sugar 3. Now, suppose I say there is a one more sugar, right? Sugar 3. And this is priced at rupees 20 per kg. Okay, so there are now three types of sugar. Sugar 1, 10, sugar 2, 15, sugar 3, 20. Done. I want to mix all three. Yeah. And I want the price as rupees 12 per kg, the average price after mixing the three different types of sugar. Done. So tell me, what is the ratio for the sugar 1 to the sugar 2 to the sugar 3? In what ratio I should mix all three different type of sugars?
Yes. In what ratio I should mix all three different type of sugars? Sugar 1 rupees 10 per kg, sugar 2 rupees 15 per kg, and sugar 3 rupees 20 per kg. And I want the mixture to be at rupees 12 per kg. Should I say 3:0? What does this mean, Shia? 3:0? Sir, I basically calculated like sugar mixture of 1:3 first, that is 10 and 20. So it gave me ratio of 4:1. And then I took the result of that mixture with the ratio of sugar 2. So 15 minus 12 by 12 minus 12 gave me 0. So you mean to say that you do not require the sugar, but still you can sell the sugar at rupees 12 per kg. No, there is some mistake, I think. Right. So 0 means that there is nothing and still I'm selling and getting the money. Right? Yes, sir, I am checking. Okay. Okay, so this is fair and waiting for others. Yes, to give some answer. See, when you solve, you realize what the mistakes you're doing, and it is very good to do the mistakes here, right, rather than doing the mistakes in the examination. Done. So this is the reason every time I suggest everyone to take a notebook and pen, paper, etc., and solve. Right. Do not be just a simple spectator. Right. Maths cannot be learned as a spectator. Right. Until and unless you do not solve, you cannot learn. Okay. So who will be the next and giving us some answer? Hello, Mahadi. How are you? Yes. So Great. I thought there is a big rain in Indonesia. There is what? Sorry. You're from Indonesia, huh? Yes. Yeah. So I suppose there is a huge rainfall yesterday. Yeah, but I'm not really impacted, I think. Okay. So what's the answer? 7 to 1. Is it like that? 7 to 1. Yes. Okay. And how is this? We can calculate that the sugar 3 and sugar 1 average at 15, and then we can use the previous calculation if you want to include each sugar. Okay. So you're saying that first I should take the average of first and third, 3. and then Yeah. taking this. So why are you taking first and third? Why not maybe the first and second or second and third? It's because the third sugar is very heavy. So Okay. I'm just making it easier, I think. Okay. And okay, now Shreya is again giving us some answer. 4:1. We know we don't need to consider sugar 2 here as they are same 12. Huh? Sugar 2 is 15 here, not the 12. Average price I need a 12, right? But sugar 2 is 15. Okay, and yes. So I wanted to say like since sugar 1 and 3 are already making a ratio of 4:1, so we don't require sugar 2. No. See, normally what we do, we make some assumption with the kind of variable, right?
So we are taking a sugar here. So we are assuming that okay, we do not need the sugar too or whatever, right? But assume that you are uh, say civil engineer and you are constructing a building and you are preparing a mix of concrete, right? So you need a sand, you need a concrete, you need a cement, right? You need a different thing. And to make this entire mix, you're taking a different ratios of all these ingredients and making them a one mix which can hold the entire building, right? So you cannot say, okay, this is like this, so I cannot need a cement, right? Yes. Getting my point? Yes. So see, this is Okay. something like the variable which we are having. We are making us some assumption. Okay, I can take this. I should not take this. But yes, if the question is saying, we have to consider. Okay. So Preeti, hello Preeti, can you unmute yourself? Yes, sir. What's your answer? So 12 ratio 8 to 3. And how is this? Firstly, I am applying alligation formula in S1 and S2, Mm-hmm. and we get 3 ratio 2, Mm-hmm. and also apply alligation formula in S2 and S3, and then Mm-hmm. get 8 ratio 3, and S1, 8 S2. ratio 3 or 8 ratio minus 3? No, sir, 8 ratio 3. Check करो एक बार. Or maybe minus 8 is to 3. Yes, sir, One minus term 8 should ratio 3. minus आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. But tell me कि can ratio be negative? क्या ratio negative हो सकते हैं? I think नहीं. Simple example, suppose मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको जो है Cadbury and 5-star chocolate देता हूँ, है ना? And I'll give you Cadbury and 5-star chocolate in a -2 to -5 ratio. तो possible है क्या? No, sir, is it not possible? Possible नहीं है ना? तो we have discussed this in a previous session when we discussed ratio, that ratios cannot be negative. Ratios are the simplest number, right? जहाँ पे co-prime होना चाहिए. Okay? Yeah, okay, sir. चलो अभी करते हैं. Okay, Krishna is saying 7:2:1. Okay, how is this, Krishna? Sir, I use the weighted average method, like the same formula N1, S1, N2, S2 plus N3, S3 by N1, N2, N3. So N we don't have, but the S value we have. And if we substitute it, then we will reach in an equation where it says 2x1 will be equal to 3x2 plus 8x3. Then substituting the whole numbers, and then you get like you play with the numbers and you get the value. Okay. So tell me, Krishna, one thing as you're saying is you're using this same formula, right? The So one at the top, sir. Acha, okay. This The one. first one, yeah. Okay, this one. Right. Okay, so this formula, as we are saying, okay, we are deriving the allegation from this weighted average only, right? So if this is the formula, so this should be the formula allegation, right? We should But also get the same. the third quantity is making little bit complex, so I just left it off. Yes. Yeah. Okay. So So you I wait feel with that so you're taking your comfortability and then whatever is like suits you, you're taking up, and whatever is difficult, you're leaving behind. Yeah. Right. Yes, sir. And very simple, right? You can check here when you're taking say 3 quantities, right? So can you take a ratio something like n1 upon n2 upon n3? Is this the way? Can I take a ratio? No. No. We can only take a ratio for 2 values, right? 2 values. Right? Okay. So for this, what we do,
if you are having a multiple quantities, right? So we will apply this formula multiple times, right? Now see how. I need the average value 12 rupees per kg. Okay, so what is average? As the name suggests, as the definition suggests, okay, whatever you have, average is something in between, right? So average always lies equal to the smallest value or greater and lesser than the highest value or smaller, right? So that is average is in the range of smaller to highest value. Done. So if you are taking a these two, as Preeti is saying, I can take a 15 and 20, right? So if you're taking a 15 and 20, tell me anyhow with any formula, can you get an average of 12 rupees per kg? Is there any possibility? If the smallest value is 15 and highest value is 20, can you get the 12 as average? No, sir. No, right? There is a no way. So this combination we cannot consider, right? So whenever we are taking up a some combination to identify the alligation or the average or mixtures, right? We always consider a pair where the average value should come in between, right? So what I can do, I can take one pair is this, first and second, 12 can be the average. And then I can take this pair that is first and third, 12 can be the average. Okay, so we have done this part, that is a S1, S2 and taking averages 3:2, right? This is the first part. And then if I take the first and third, so I can say sugar 1, this is sugar 3, this is 10, this is 20. Write this in between, subtract from the bigger value. So this is 8, right? And subtract this from the average. So this is 2, and ratio is coming out to be 4:1. Right? So now you have a two different ratio. One, this one for sugar 1 and sugar 2, and the second one for sugar 1 and sugar 3. But I want to mix all the three, right? So when you're mixing, so all these mixtures are there. So now what we do, we have sugar 1, we have sugar 2, we have sugar 3. Right? Well, how much sugar 1? 3. How much is sugar 2? 2 in the first, right? And how much is sugar 3? 0 in the first. When I go for the second, sugar 1 is what? 4, sugar 2 is 0, and sugar 3 is 1, right? Done. Now, when we are having a ratios in this format, when there is a one common ratio, so what is the learning we have in the past? We multiply or we take the LCM, right? But here in the alligation, you will not multiply, you will not take the LCM, you will add these ratios. So this is 7 is to 2 is to 1, right? These are the ratios. Why? Why we are adding? See, when you're mixing up, so there must be some quantity, some weight. So the first you are taking how much? 3:2. Total 5 part, right? Second, you are also taking 4:1, total 5 part. So 5 part plus 5 part, this is adding up to how much? 10 part. So 7 plus 2 plus 1 is total 10 part, right? So this is the reason we are adding up here rather than we are going to multiply, right? So if you are having a multiple variables, you can identify the alligation in this manner.